Good day, good evening, and good morning. This is Rustam Shah from Rustam Shah Live special today with Dr. Michael P. Masters. And Dr. Masters is a professor of biological anthropology at Montana Tech in Butte, Montana. In 2019, he published his book, Identified Flying Objects, a multidisciplinary scientific approach to the UFO phenomenon, which cautiously examines the premises that UFOs and aliens may be our distant human descendants returning from the future to study their own evolutionary past. A fascinating subject. I have read his book, not only read his book, but after reading the book, I actually uh, downloaded his audiobook and heard it a couple of times. It's a fascinating book. Uh, so I would highly, recommend for everyone who is interested in this subject. This is his book is available on major, book selling websites. Identify Flying Object must be precisely put by Dr. Masters. So first of all, Dr. Masters, thank you very much for joining us today. Yeah, absolutely. Thanks for having me on. Okay, let's start with the easy question. Were you always interested in UFOs, or it happened later in your life when you were studying? Well, I guess yeah, for the most part, as long as I can remember, really. I I guess I became interested in it around the age of 8 years old. Heard my father talking about a UFO that he saw while he was out at work one night, late at night, with a colleague of his, and yeah, it really piqued my interest. I didn't realize this was a real thing. Obviously, you see it on TV and in movies and things, but just kind of piqued my interest hearing someone talk about it in real terms. So I think that sort of piqued my interest. And then um, I saw the cover of Whitley Strieber's book, Communion, around that same time. Came out right around then, I think, 87 maybe is when it was. Yeah, and I had this mental image that I somewhat cheesily represented in the image you have up there with an early hominin, a modern human, and then this archetypal gray alien form from the front cover of Strieber's book. And yeah, just made me wonder if there could be some sort of phylogenetic relationship, seeming how we share the same characteristics, the traits that define our hominin clade. So yeah, kind of just started pursuing that. Decided it was interesting enough to look at in more depth throughout my college years. Started out in physics and astronomy, and then switched to biological anthropology as an undergraduate. And it wasn't just for this question. I felt it was the best way to pursue this in sort of a scientific way. But there's also many other things about anthropology that interest me, so it seemed like a good fit at the time. Interesting, because it seems biology and evolution and time travel. It's they seems two different subjects. But you made a very interesting connection. Now, actually, I have read your book, but for those who are not familiar with your work, if you give us a few, clues or evidence from biology and from our evolution to start with, that what made you think that these aliens, so-called aliens, are actually our future descendants visiting us? And you just made a reference of this particular picture. I must give you this. It's a fascinating picture. I mean, they look similar to me. I mean, Yeah, two eyes, 2 ears, and you do look like there's a transition going on. yeah, and I was trying to represent it in simple terms. I could have hired someone to illustrate it or done it myself, I guess. I'm also an artist. But I wanted to sort of capture the basic idea in the simplest way possible. And yeah, you're right. We have bilateral symmetry. The craniofacial arrangement is the same. The brain on top, two eyes, nose, mouth, ears. But then if you look at the way these beings are so often described by those who
have close encounters, and many people throughout the world do and have throughout antiquity. It's an ageless phenomenon, really. You can see not just that we have the same features, but we have different grades of those same features. So the more primitive form is obviously associated with our more distant ancestors, the Australopithecines, Ardipithecus ramidus, Aurorantuganensis, all of the ones that we came from. And then obviously we know what modern humans look like, and we have more developed traits with regard to an expansion of our brains, not just in size, but also shape. It's expanded mediolaterally. It's come out over top of the eye orbits. Our faces have retracted in association with encephalization or this brain growth. And so we could see how, if these same trends that characterized the last 6 million years of human evolution continue into the future, we're likely to have a form that's consistent with what's described so consistently across these reports. We can look for patterns in the data and really connect the dots there. It's not speculating about what the future might be. It may be observing what we actually look like in the future, in the same way that we can dig up our fossil ancestors and look at how they actually looked in the past and how we went from that to this, and then just project that forward, while also perhaps getting a snapshot in time, a glimpse at these different times they might be coming back from. And more recently, I talk about this more in my upcoming book, but it seems that there's a number of cases too that involve very modern human-looking individuals. Obviously, their technology is more advanced. They're using things that we don't have yet, electromagnetic, this propulsion system, and but for the most part, they look almost identical to us. They speak vocally. They haven't developed that telepathic form of speech yet. So it indicates to me that we actually may be coming back from a more proximate point in the future initially, and then these ones that we see are indicative of our ambassadors from deep time, that they have evolved that time travel capability, they've evolved their features and other technologies, and are coming back from the more distant future. Is there a chance, just a side question, our ancestors have their gods like Apollo, Zeus, or Thor, and they were also human looking. I mean, is that possibility that we are perhaps doing the same thing, and this is just in our imagination? I'm not suggesting otherwise. I'm just asking because we had these uh, examples from our own past, and our gods were always like us. I mean, although they were very powerful, and they were very mysterious, but they were always human like. I mean, they have like Thor, and so is there any possibility that we are doing the same thing with our future alien um, hypothesis? Absolutely, yeah. Or you could turn that around and ask it the other way. Is it possible that they also saw these more advanced godlike beings from the distant future and created myths and legends around them? It's possible that they inspired many of these, and we see that throughout the Old Testament of the Bible, and a number of other texts in the Quran as well, where you have things that are very indicative of the modern UFO phenomenon being described in these ancient texts. So Ezekiel is probably the most common one. Many of his nighttime visits, unexplained pregnancies, in fact, the Pentagon just confirmed that that's an aspect of this UFO phenomenon. So it might help explain many of these things throughout the past. But you're right, we also have to be careful of anthropomorphizing things, where then, yeah, we would expect that we would impose a human form on them. We have a tendency to anthropomorphize everything. And there's a lot of cave paintings and ancient drawings that depict animals in human form too. So we have a tendency to do that, and it's certainly important to be aware of that. But if we look across the reports, and there was a good comprehensive study done by the Dr. Edgar Mitchell Foundation, the FREE study, and it found that the majority of these beings that are observed are human or human looking, just like us. But then you have the short grays and the tall grays, and collectively, and then hybrids rounds that out, but collectively that accounts for almost 90 to 95% of what's reported in these close encounters. And every single one of those
is hominin by definition, upright walking bipedal beings with the same traits that I just discussed earlier. So if there was an extraterrestrial component to this, or if it was exclusively extraterrestrials, we would expect there to be more variation and also things that didn't look anything like us. They didn't move like us, they didn't act like us. But because it's so consistently described as human or human-like or hominin in so many words, it indicates that that is a real thing. But you're right. We have to be careful of the psychocultural hypothesis and be aware that we do anthropomorphize things and have throughout a long period of time. Okay, so you speak about bipedalism quite often in your talks, and or one of the strongest evidence for, you know, evolution towards, I would say, intelligence. It helped us, at least our ancestors. It's a good idea to you have free hands so you can manipulate Mm. tools. I mean, you can walk long distances. Lots of so. Explain us why you think that the bipedalism in human evolution was important, and what kind of effect it has on our evolution so far. Yeah, it's a good question. And you're right. I do mention it a lot because, well, as I just mentioned, it is the trait that defines our lineage, the hominin lineage, where if you go back 6 to 8 million years into the past, where we last shared a common ancestor with what would eventually become Panpaniscus and Pan troglodyte, the bonobo and the common chimpanzee, respectively. Um, we looked and acted more like them. They evolved too over that time, but when we stood upright and started habitually walking bipedally, it really ushered in a number of changes. First and foremost, related to our craniofacial form, because we had to rotate our heads down to see where we were going. If you stand a chimpanzee upright, their head orientation's more toward the sky. So by rotating our head down, we created this juxtaposition between our brains and faces, where the foramen magnum, the big hole at the bottom of the skull, starts moving anteriorly or more forward, and then as our faces retract and also shift downward and become smaller, it creates more flexing in the base of cranium. So it's rotating everything around, and it creates more space in our neurocranium where a bigger brain can grow. But yeah, beyond that, there's a number of other important things that bipedalism provided for us. And we can't know why they did it, but clearly the benefits of bipedalism outweigh the costs. And there are a number of costs. We suffer from a number of hip problems. I'm suffering from the serious back pain right now, Back pains, this very yes, moment. yeah, Knee problems, hip problems, varicose veins, hemorrhoids, hernias. Our heads are farther from the ground, which creates problems with blood flow and also injuries. A lot of people die just from hitting their head, especially older people that'll fall, hit their head. They think they're fine, and then they die a week later. So there's a number of issues related to it. But again, the benefits must have outweighed the costs, or we wouldn't have kept doing it. And as you mentioned, one of the most important ones is our hands. It freed our hands up to make tools and to gesture and to do all of these important things and create all of these important things that really help propel us into this new phase, constantly new phases of further advancement in technology and culture. And yeah, I mean, it really was an important thing, and something I point out in lectures that didn't make it into the first book. Um, but the fact that we do it here and we're the only habitually bipedal mammal is significant. And Earth is relatively small. In fact, according to data from the Planetary Habitability Society at the University of, I think it's in Puerto Rico, Arecibo, maybe, they show that only 2.2% of planets that they've found, exoplanets, are the same size as or smaller than Earth. So if it's already difficult to walk bipedally here, as indicated by the fact that we're the only ones that do it in the mammal kingdom, then it indicates it's going to be even more rare on other Earth-like exoplanets, because the vast majority, 98% roughly, are bigger than Earth and therefore would have more gravity, and all of the problems we suffer from here are yeah. going to be exacerbated on these other planets. Okay, but we humans are
relatively new on evolutionary scale on Earth. Uh, but before that, we had a very long, evolution of dinosaurs, and I'm pretty sure some of them were also bipedal, and they had more time, at least millions of years evolution. Uh, but we don't see that kind of progress which we had. Um, do you think there is any particular reason? Maybe that time, the processes or the pressures, evolutionary process of pressures were different then. I mean, why? I, is there any universal law which says that a dinosaurs cannot evolve to a kind of a sentient or intelligent dinosaurs? Or they had a lot of No. time. They had a couple of things working against them. One thing to keep in mind is the dinosaurs lived more than 65 million years ago, going back to like 100 million years ago, depending on when you define that particular group. But it's important to keep in mind that mammals at that time who had homeothermy, we created our own warmth. We regulate our body temperature. We lived underground because we could come out at night when all the dinosaurs were asleep. They don't have homeothermy. They don't make their own body heat, so they were relying on the sun. They were out during the day. They were diurnal. Our ancestors were nocturnal. So that's one limitation, that you can only really be active during half of the day. The other thing is that their brains were really, really small by comparison. After they died and our mammalian ancestors came out and occupied all of these new ecological niches and what's called an adaptive radiation, we could be active during the night, but also during the day. We could live in all of these different niches that weren't available to us before. And our specific ancestors, the primates, went up into the trees. So we evolved into the trees, which gave us another number of things that now contribute. It helped us with social organization, increasing brain size, bilateral vision, so we could see depth in these trees, color vision, so we could see if it's worth it to go out and get the fruit at the end of the tree, risking our lives, being able to tell if the fruit's ripe or not. And then importantly, again, the hands. It gave us highly dexterous hands and feet that allowed us to grab onto these tree branches. And then over time, primates became more and more intelligent. We started getting bigger. We came down from the trees to some extent. We still relied on them to a large degree, but our chimp-like ancestors, gorilla-like ancestors, orangutans, all started to get too big for the trees, started to come down, and then that started this process that we built on top of as hominins. That whole time, throughout that period, over 65 million years since dinosaurs died, and hominins evolved, our brains were growing larger. We were getting more gray matter. We were expanding beyond the simple reptilian cortex that they had. And it's certainly possible that this could have happened with them as well. But not making their own body heat and having this very primitive brain that we had 65 million years to build on top of gave us a unique advantage and allowed us to really move forward with our development of culture and technology. It just really wasn't available to them at that time. Had they not died, had they had 65 million years to further evolve, it's very possible that they could have gone on to develop all of the things that we have as well. But the way it played out, it's fun to imagine other scenarios, but the way it played out very much benefited us at their expense. Yeah, we seems to be quite lucky, I would say, And and that's an some. important thing to keep in mind too, is that there does seem to be an element of things happening just the right way. So when people say humans are going to evolve on all of these different planets, there's really no evidence for that whatsoever. And it seems highly unlikely that that would happen, considering how many unique events transpired to get us to where we are here and now and today. Dr. I'll Masters, yeah, Yes, go ahead. I got a follow-up question. Hmm. So we saw that the age of dinosaurs was pretty long in terms of the life of Earth, life on Earth, and we can see that humans have a history of about 6 million years, and out of that, like last 1.5 million years are the most prominent one that we can see. Now, what are the factors that contributed to the pace of rapid evolution of humans? Is Yeah, that that's the a good question. pressures of the environment itself,
or are there any other things that might have contributed to such rapid evolution, because we don't see that in the earth of history so often? Yeah, that's true. And one thing to keep in mind, though, is when we say dinosaurs, we're talking about many, many different Yeah, species of dinosaurs. But when we say humans, we're talking about one species. So yeah, we could say primates, and then that gives us 65 million years. We could say mammals, and that gives us, some 100 million years or so. Tetrapods, 400 million years. So it's important to differentiate between phylogenetic groups and individual species. So certain dinosaurs certainly had a long reign on this planet. They're also evolving, changing at some point. We would name them something different because they evolved beyond that point. But with us specifically, yeah, that 6 million years sounds like a very long time, but you're right, it's relatively short in the context of the history of primates, the history of life and tetrapods and all of these other groups. But yeah, one thing that did make us unique and allowed us to evolve somewhat more rapidly by comparison is that our brains got bigger, our hands were free, and it created this sort of feedback loop. We call it the runaway hmm, brain, yeah, where our brains got bigger. It allowed us to move into new environments. Those new environments challenged our brain, and it created this feedback loop where we use our brains to solve problems instead of the slow process of biological change where we evolve to a new environment through the process of mutation, natural selection, gene flow, and gene drift. We don't have to wait for that. And whose babies are going to survive, whose are going to die, those babies grow up. We can just use our brains, look at a situation, solve a problem, and then pass that information on instantly to all of our friends, family, to our offspring, obviously, who then take that and build upon it. So we get this baseline culture knowledge that we're constantly building on, and it's happening faster and faster. It's an accelerating rate of change, yeah, and it continues to be today. But humans are also unique in the sense that that culture influences our biology. yeah, So we call it biocultural evolution because you can't separate them in human evolution. It's one thing that makes anthropology somewhat unique compared to human biology and some of the other sciences that study humans is we look at that feedback loop. We look at that relationship. Lactose tolerance is a good example, how we yeah, evolved to be able to process milk into adulthood. Other mammals can't. That shuts off. Many people even alive today who didn't domesticate cows and goats and sheep and camels and other animals that we drink milk from, they still have that wild type, the ancestral version where that gene that breaks down lactose shuts off. So that's one of many examples of how we have this feedback loop that continues to propel us forward. And with information exchange, especially after language really became important, which most anthropologists think happened around 1.5 to 1.8 million years ago, where we developed an early proto-language as Homo erectus, that really sprung us forward again because now we could share ideas simply at first, but now in very complex ways. We're having this conversation across continents using words that our ancestors gave us. They helped us to develop this lexicon to speak of these things. And that all had to be built on something. So we have this deep, rich foundation, not just in our biology, but our culture, and they're completely inseparable in human evolution. great, great. So one factor that I was pretty interested was standing upright of human beings, because of which our minds got bigger, and eventually our minds got so big that the pregnancy period had to be shortened. Our babies are effectively premature when they are birthed, and it takes around 1 to 2 years for them to stand upright and walk. So that allows our culture to be built in a social form, Mm-hmm. because you have to take care of the babies. And that, again, it's a kind of a culture and gene coevolution cycle that propels our development. Yeah, and importantly, tying it back to your last question, is that by coming out early, it does create more of a social environment, like you said, and especially because we're very paedomorphic and we're cute and things, and obviously humans want to nurture us as babies. But even beyond that, by coming out early, it allows us more time to develop our brains at the point where they're growing the fastest in a stimulus rich environment where we can learn our culture, we can learn the language, we can learn to walk. That's obviously instinctual, but learning the things around us that are built on top of instinct, what we call culture, those are all learned. So by
being born in an altricial state, coming out early, we can have this collective mentality, this social solidarity associated with raising the next generation and sharing and the responsibilities associated with that. But also we're growing our brains at a time when we can really just absorb everything, soak it all in. And kids are very good at learning languages and learning new skills. It gets harder as you get older. It's almost like that part of our brain shuts off. But yeah, it's another thing that adds uniqueness to our species that others don't have. Most animals are born with the same brain size as they'll die with. Baboons are a good example. I think when you were just speaking, I was thinking that it's just like a script from a writer, where every jigsaw puzzle fits together, and the evolution and the progress gets stronger and quicker. I mean, we were developing at a rapid pace. I mean, in compare with the other species on Earth. Like you said, 3 million or 6 million is nothing in compared to the 4 billion years of evolution on planet Earth. So now, in context of your theory that the future humans, you know, coming back, and we will discuss this. Do you think there is any chance that the future may have something to do with the past? You know, this causation, future, uh, I would say, tried or manipulated the past in a certain way to produce a certain future timeline. Is there a possibility, you think, that because of so many, we were lucky so many times? I mean, the dinosaurs had to go, and then all of a sudden we had a giant meteor asteroid hit, and all of a sudden, almost instantly, I mean, if you will, the dinosaurs were gone, and then the path was free for us. And Mhm. then all these evolutionary traits we have, I mean, caring for babies, memory, bigger size, uh, we can transmit information, the development of language. Now, if you are a good writer, I mean, you can write a pretty good book on it. uh, do you have any ideas or theories about the future, meddling in past to create a certain timelines? Yeah, that's one thing I didn't talk about in my first book, for a couple of different reasons. It was already pretty long, and I thought if I got too deep into the multiverse versus block time issue, it definitely would have gone over my page limit. But I did um, allocate a good amount of space in this new book to talk about that, because it is important. And the vast majority of physicists and others who study time outside of physics agree that the block universe is probably the best model for interpreting time and space. And within the block universe, you can't have change. There's no such thing as changing the past. Everything you did in the past, you are always going to have done, and any change or effect has already manifested itself before you went back to do it. So you're going back to do the thing you always had done and always will do, depending on how you look at it, from the past to the future, from the future to the past. So in that context, there wouldn't even be the possibility of going back. Another issue is I don't think we can go back that far, to 65 million years ago. Even if we were influencing, whether it be overtly or unintentionally, the past, I think there's an upper limit to how far back we can go, just based on the physics and technology involved in backward time travel, which nobody knows. I certainly don't know, but I would put, just based on things I've read and what seems logical, is probably 50 or 60,000 years into the past. So there's really no indication that we have been manipulating the past. In fact, I think what they're doing, especially with regard to gamete extraction and all of the things related to reproduction that they do, seems to be for them. That they're not trying to manipulate us in any way. They're trying to do something where they require these aspects of our past reproductive abilities to help with some problem they're having. But then, yeah, you also get in the issue of paradox. You don't have time paradoxes with block time because of that inherent self-consistency.
read the Navikov self-consistency principle. But if you're talking about timelines and multiverses, you do start to run into those problems. So if we saw some issue and we wanted to go back and change it, that creates a new timeline. How do you know that you needed to change that thing if it never happened in this new timeline? And that's one of many problems that arise. Jumping between timelines, being able to identify which timeline is which and what happened where and what's going to happen there, or how you change it. In fact, many people would argue with regard to the Everett interpretation, the many worlds interpretation of quantum mechanics, that even just by going to the past, you create quantum decoherence and a new timeline is formed before you do anything in it. So if every time we visit the past, it's a new timeline, you could see how that would just get wickedly messy in a very short period. So you don't have these problems in the block universe. And even outside of all of these issues, it's not necessarily a straw man thing where, all of these issues arise. So it must be this, but most of our science indicates that the block universe is correct. And in that situation, we don't really have to worry about those things, nor could we change something even if something did go wrong. So, in your view, the future is not probabilistic, but a fixed future, and no matter what we do, we will end up somewhere which you can say almost. I will not use word plan, but we are going in a certain direction, and no matter what we do, we will end up in a certain future. Well, you could ask somebody that 1,000 years in the past, or you could ask the dinosaurs that too. And we know that there was one history leading up to right now. Does that mean there weren't a billion other possibilities? No, but we know there's only one. And in the future, we will have only one history as well. So yeah, it's not necessarily that it's planned or that it's, the predetermined is a better word for it. But it's not necessarily that there is one outcome or that we know the outcome or that it's teleological in the sense that we're moving toward some specific thing that's better in some way. It's just about how you perceive time. And in the block universe, you can perceive all moments that have ever existed from the beginning of the universe to the end of the universe as already existing as one massive block of four-dimensional space-time. And in that context, it's there. It's as real as the past is. It's a fundamental aspect of eternalism rather than presentism. So, yeah, it's there. But I think humans try to ascribe meaning to it or try to make it something that it's not, mostly because of free will and all of the issues that raises. But yeah, it's the future's as real as the past. We just haven't experienced it yet with our perceptive abilities. Yeah, that was my thinking because of the question of free will. Because in block universe, free will in the sense we understand or we want to have, maybe not possible. But I anyway, came up with a term the other day. I don't know if somebody's probably coined it already, but I started calling it feel will instead of free will because it feels like we have free will, and that's good. Nobody's going to take that away from us. Who cares if what you were going to do is what you were already going to do? It feels like you're making a choice. It feels like you're freely deciding. So yeah, feel will is real. Free will is not, and who cares? okay. So moving on, the physics and the physics of time travel. So there is no universal law which prohibits time travel. Let's say, or do you think there are limitations in theories or in physics which gives someone say no, time travel is not possible? Because there are a few scientists that say, well, time travel is not possible. Here you said no, it is not even okay. I know because you believe again. I don't know if it's the right word to use, but because of the block universe, of course, then in block universe it will be possible to you because everything exists. So it may be a possibility that time travel exists. But if you talk about the physics, you ever considered that? Because it seems to me the amount of energies required or resources required in order to travel time back in time
will be huge, and even in the future, resources will be limited. Uh, so, one question I usually have, because the frequency of people reporting these sightings and abduction cases, and they are in thousands, and for years. I mean, is it that easy? I mean, the resources are that abundance in the future that everybody can come back in time and do, or you think there's something else is going on? No, I think if and when it ever does become possible, it's going to be highly regulated. Just like, you can't go out and buy an Apache helicopter on the free market. If you're a government, you can. Oftentimes, people don't care what you use that for, unfortunately. But you limit who has access to those resources, and I think it's going to be even more highly regulated with something like backward time travel. Again, not because you can disrupt the past or create a new timeline, but you could definitely freak out an entire civilization, especially at a time prior to when we knew who they were and what they were doing and how they were doing it. So, no, I don't think everybody's going to have access to that technology by any means. With the energy question, the way we would have to do it now, the amount of energy we would need currently to create closed time light curves is astronomical. But there's a couple of things to consider. Obviously, the evolution of energy, and it very, very strongly correlates with society. It was E.B. Tyler, I forget who it was, an early anthropologist from the 1900s, showed this very strong correlation between a society's ability to harness energy and their overall complexity as a group. And the better energy we get, the more it allows us to do things in different ways. But another situation that we have to keep in mind is that even if we have better ways of harvesting energy, and in fact, one case study that I talk about in my book that happened here in Montana, not far from where I live, this UFO was sucking water from a man's sluice stream where they mine for gold in these streams. And he just happened upon it, and they were surprised. They were like, "Oh, sorry." Spoke to him in English, and they looked exactly like us. They were modern humans. Gave him a tour of this thing. He actually wrote a letter to John Glenn describing this, thinking this technology could help us develop this same technology, which we are likely to go on to develop anyway. But mentioned specifically that they took the water to extract the hydrogen as their fuel source. And we already use hydrogen as a fuel source. So the question becomes, how do you get enough energy from hydrogen that you can power a craft capable of incredible speeds and potentially the ability to go back in time? And if you look at a paper by Hal Puthoff, and he references also a book by Paul Hill, what he's arguing is that it's not necessarily that we're using our modern physics or our understanding of space-time now, but manipulating space-time, manipulating the space-time metric, as he says, in order to lower the energy requirement. And Jack Sarfati says similar things. So it may be that we're not necessarily just getting more energy, but we're modifying what we need that energy to do as the end result. So it requires less energy to get the same result. So I don't know. It'll be interesting to see, but I honestly don't think we're too far from doing it. I think anti-gravity propulsion, I think backward time travel is probably going to happen a lot sooner than many of us think. I heard you say a couple of times that you will not be surprised if you know that it's possible or not in the next 100 years or so. Yeah. And I never thought that before. When I wrote my first book, it was really in the context of these grays, this really long-term future human evolution. But in this new book, I focus more on different case studies, looking at patterns in the data across the world through time, going back almost 100 years. And then obviously cases in antiquity too, bringing those in. And it's insane how often people describe people, not humanoid, human-like, but
but humans in every sense of the word. And there's obviously, you could argue there's ways that they could do that if they're extraterrestrial, but that adds another assumption. So in an Occam's razor context, that adds more assumptions, more probabilities that aren't necessary in this context, because we know we're here. We're already doing these things. We already look like this. It's a more parsimonious explanation to just run it forward in time a little bit, that it's likely us. Yeah. Okay, you just mentioned briefly, but this concept of, you are familiar with this concept of prime directive. I'm a Star Trek fan. Yeah. And now it's the possibility that a time traveling aliens or humans or are mere observers. I mean, we cannot rule out that the possibility that the detection of their presence might shape civilization in certain direction. I mean, for example, in Marvel universe, this fantasy universe, once the Thor came to Earth, Shield started to develop stronger deterrents and weapons, and there was no need for that, but because there was a new, threat or alien threat introduced in that society, or in that thinking pattern of humans at that time. So they changed their thinking altogether. I mean, this is like saying that you are, even if you don't want, if you're just watching them and doing nothing, but their mere presence would change the society or their direction quite radically. That's why sometimes people say, well, the government wants to hide this fact because people are very reactionary, and they will say, oh, everything is doom and gloom. Now the aliens are here, and everybody will think of the survival, blah, blah, blah. So they just keep it secret. And I think people are reactionary. You don't need to tell them everything. I understand that. But this, you mentioned quite a lot that these aliens or these future descendants of, they usually come and pick people literally from their beds, or they abduct them whenever they want to, do all kinds of experiments on them. So what do you think, what kind of rationale would be for our humans? I mean, why would you do this? Or why somebody's coming back in time and doing all these things? Yeah, I think with the prime directive issue, it applies in both situations. With extraterrestrials coming here, not wanting to change things or change things too quickly. There was an episode of The Orville, another sci-fi show, where they talked about that. I just watched, speaking of Marvel, The Eternals, I think is what it was called. It's one of the more recent ones, but a big part of that particular movie is about that very idea, that they're waiting for humans to progress themselves, and it's this painfully slow process for them who already have this advanced technology. But I think the same applies in a backward time travel context too. I call it a temporal prime directive, because you wouldn't want to, like I said, you're not changing anything, but you wouldn't want to necessarily interject things at a time to mess with the natural progression, which is sort of the base idea of the prime directive. It's possible that Roswell did that in 1947. If we had future technology crash into a more primitive period of the past, it's innately going to do that, and most likely take us in the direction of creating that same thing that we then crash into 1947 in this closed time-like loop, so to speak. It also helps account for the bootstrap paradox and some of these other perceived paradoxes that actually aren't, in the sense that we don't need a creator of this technology. It's just always existed as these 2 points in time that are connected throughout block time. But it is possible that there will become a point in the future where we do know who they are, and we know why they're doing these things, why they're picking people up from their beds in remote places, or getting them from their cars when they're on a desolate highway in the middle of the night, and basically doing exactly what I would do as a biological anthropologist if I had that
ability to pick people up and sedate them and study them with their soft tissue anatomy, not just the fossilized bones and teeth that we have from our own hominin past, but get all of this data that we just can't because we don't currently have access to time travel technology. But what they're described doing, or what people describe having been done to them, is almost identical to what I or any sort of medical anthropologist or many cultural anthropologists, you see a lot of correlates there with what we study in linguistics and cultural anthropology. So it does seem to be some sort of scientific research project. And in talking about how it's most likely going to be highly regulated and limited to only certain groups, it's most likely for that reason, that you don't want to take a chance of something crashing, maybe even in a more populated area. Imagine if Roswell had happened in Times Square. It would have been a very different situation than it was. It would be much harder to hide. It would be much harder to reverse engineer that tech because everybody's aware of it, and there's no way to really hide that fact. So I think, and when I talk about how we're not as far from it as what it may seem, I honestly think it could happen in our lifetimes, where we reach a point where we can understand time and intentions, our own intentions, enough that they don't have to be secretive anymore. If it's not going to create any temporal disruptions, if it's not going to change society or crash the stock market, not going to create new timelines, who cares? We could have temporal ancestry in the same way that we have geographic ancestry now, where you hang out with people whose ancestors lived in sub-Saharan Africa or Australia or New Zealand or Japan, wherever, and you might see those slight variances in their physiological form and their culture, their way of speaking, because they come from a time in the perhaps not so distant future. And obviously I have no way of knowing if that's going to happen, but it seems like a real possibility once we know who they are, what their intentions are, and really we get past any fears of what that might be, or why they might be doing what they do. Okay, so, but you don't completely ruled out an alien civilization similar, uh, like humans, I would say, or a human-like. I mean, with walking on two legs, you don't ruled out, but you just think it's highly unlikely because of the evolutionary history you described earlier. But is Yeah, it possible that in our neighborhood, in cosmic neighborhood, there may be something just like? I Is it mean, possible? anything's possible. Absolutely. I would never say that something is impossible, especially considering how little we know about the universe and about what's around us and how short of a period of time we've had to be able to really observe and look. And we're constantly developing new technologies that allow us to look deeper or more clear at neighboring planets. So yeah, it's definitely possible. But again, in the context of the most parsimonious explanation, the one with the fewest assumptions, and just the low probability from an astrobiological context that you would have things that evolve to look and act and speak like us. It's really just probabilities. I see that as a very low probability and would ascribe a higher probability to us continuing to exist in the future and continuing to evolve biologically and culturally and technologically in the same way we have throughout the history of our species. So are we still evolving biologically? Oh, yeah, definitely. Absolutely. And we're evolving with our culture at an even faster rate than we ever had been before. Evolution is a constant. We're constantly changing, and there's a number of indications of that. I was asking, I was thinking because there are now few scientists. I mean, I read a book from physicist Max Tegmark. Hmm. He wrote a wonderful book, Life 3.0, and there are many others who said that the next phase of evolution will be digital. I mean, they suggest that the artificial intelligence it will take over and it will evolve in such a way that we cannot even imagine today how powerful it will be. It is quite possible that this biological evolution turn into a hybrid biological machine. Hmm. Uh,
now we see there are already some technologies emerging. So, as with all technologies, once we humans create something, we always make them better. We just like over 100 years ago, the Wright brother flew maybe a couple of 100 feet, but now we can fly almost like 24 hours or 22 hours in 777. Uh, Yeah. so, do you think The there I is a think the possibility? I think the moon landing was only like 60 years ago or something too. And Yeah, 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 it's yeah, happening exactly. fast. Yeah. Oh, yes. So, in context of time traveling humans coming by, but with the advancement of technology, how do you see? Is there any possibility that these machines are actually not human per se, Hmm. but developed by machines? And these grays, I mean, if we can manipulate genes today with the technology like CRISPR, it is quite possible that this machine can, produce these grays as biomechanical decomposable robots, uh, which look and appear as, lifelike, but they could be just like a machine, a biological machine. Hmm. And so, have you ever considered this idea or possibility? Yeah, absolutely. And in fact, I consider that one of three glaring omissions from my first book, or just things I hadn't thought of that seemed obvious once I published it and I started having conversations with people just like this. I mean, a lot of it came from these long form interviews and podcasts and other formats. But AI was one of them. I didn't mention it at all, other than briefly in the context of how we might develop AI for some early backward time travel research, because we would want to send a self directed automaton back in time in case it didn't come back. And until we really figure out the process, it seems like that would benefit from AI. But then I started to think about all of these other ways it could work, and then came across the Pascagoula abduction with Calvin Parker and Hickson and Parker, Charles Hickson and Calvin Parker, where they were abducted by robots. They called them robots. They described them as floating entities with these antennas that communicated with each other with these kind of buzzing sounds. But there were also humans on the ship that they were taken into. They could see these humans as they were being abducted. So yeah, I think it's very likely that it's going to be an aspect of it. And going back to what we started this conversation with, we're likely to create them in our own image. We're already doing that. We're trying to make human-like robots for all kinds of different reasons. But one of them is probably just that it's less scary to us. A lot of these great thinkers of our time are warning about the dangers of AI, and it is a real fear. I think his name's Josh Clark. He had a podcast called The End of the World, but he talks about the paperclip scenario and how it's just going to drive us toward greatest efficiency, which may mean that humans are exterminated because we don't do things efficiently. So, we always have to be concerned about those things. But I do think, and many others do, Max Tegmark, as you said, and others think it's going to be an important part of our future, and perhaps even to the point that we create ancestor simulations. So we can't write off the simulation hypothesis, and that could help explain why everything looks so perfect to get us here now, as all of the other simulations failed. But we reach the point where we can talk about this as a possibility because things happen to have been working out just the precise way to get us here and now, and at least one time to get us through this to the point where we can create ancestor simulations to start with. So I think, yeah, we should absolutely be considering all of these things, and AI is certainly one. Great. Dr. Master, since the Hmm. time is very limited, so I want to ask the final question, and this would be related to the perspective, cultural perspective about the UFO sightings. And I want to be as humble as possible because I'm coming from an Asian perspective and an Indian perspective. See, the number of sightings that have occurred in last 70 years, most of them have happened in the Western world, mostly in Europe and the United States. Now, I wanted to understand because the
impact of these countries in the Asian countries that has started to increase in the world. The Chinas, the Indias, let's say Japan, South Korea, these countries, they have started to become more impressive with their economic growth, their growth in technology, etc. So, what could be the reason that UFO sightings have largely been focused in the West only, particularly in the United States and part of Europe? Yeah, that's a great question. I I think part of it may be related to the nuclear issue, that because many of these nations have developed weapons that are capable of destroying most life on Earth and really tainting the Earth for what our descendants would be using it for, i.e., not being sickened with radiation poisoning. It may be related to that in some way. It could be an aspect of time tourism, cultural advancements. There are a lot of UFOs sighted around ancient, historic, and prehistoric sites too. So, um, it's not all just focused on Western culture or certain developed nations over less developed nations or anything like that. But you're right. As the BRIC nations become more developed, as less developed countries reach a state of development, there could also be some correlation with capturing them more. Maybe people are seeing them in the same amounts, but they don't have access to the technologies that allow them to have some form of proof that they can then share with other people. So they just don't talk about it. There's so many things that could be involved with that. But yeah, I think you're right. It's really interesting how there does seem to be some sort of cultural bias. It could also have something to do with the Roswell crash. And if that happened in America versus Zimbabwe or New Zealand or wherever, it's going to create more of a focus on whatever group is now in possession of that technology, because they're going to be asking questions, eventually figuring out how this works, and then become the ones using it. So it could just be a result of where that UFO happened to crash too, if that did in fact take place and it led to downstream changes to our relationship with them. And many argue, obviously nobody can substantiate this yet, but many argue that we have been in contact with these visitors for decades, and even working with them in various capacities. And many report seeing people in modern military uniforms. Terry Lovelace is an example. Travis Walton describes this as well. Jerry Wills describing these alien beings, but with what look to be military members from our modern times. So I don't know. It's a great question, and I think it's certainly something we should pay attention to as we get more economic and Yeah, and technological development. yes. Actually, I wanted to ask you that question because I am actually from Pakistan, Mm. and my friend here is from New Delhi, India. And if you know Indian Pakistani history, we don't like each other very That's much. very true. One of, And one of my best friends is from Pakistan in college. So. yeah, and we both have nuclear weapons as well. I mean, Hmm. in compared to the Western world, they consider us to be, less safe because we fight a lot with each other. So we were wondering earlier also, before we start subject on the program, that it's quite very. I mean, I never heard in Pakistani news media or print media. I don't know if it's. I think Instant Output had the same thought. We never heard any uh, UFO related incidents, or it seems either the future humans think that we are very good protecting our nuclear arsenal, so they don't say, "Okay, you guys are very good, so you're doing a good job, so don't Yeah, give it that's a us." good way of Or looking at it. yeah, because we have some broken arrows incident in USA alone. I think three or four of them. Yeah. So we just chuckle and said, okay, maybe they say, okay, you guys are good, you are doing a great job, so don't worry, we Yeah. don't mess with you guys. I mean, that's true. Another thing that just popped in my mind too is how our cultures perceive this phenomenon. And maybe and I'm not just speaking about the US versus India, Pakistan, or anywhere else, but like how much it can make it into the the zeitgeist of that time in that place
if it's something that you just don't talk about, or it's squashed by different media outlets. And there's a lot of variation in the way governments approach it too. The Canadians were more open about it. The US was very draconian in their approach to this subject. And that's going to affect the media and what you see as a consumer of that media too. So yeah, I mean, maybe there's a nuclear connection. There's certainly a nuclear connection, but I don't know how well that correlates with what's seen by members of the general public. It would be an interesting study, though, and I'm sure you could look at. It'd be pretty easy study. Look at the number of sightings per capita in these different countries, and then just do a t-test, nuclear versus non-nuclear nations, or we'll even look at the time at which they acquired nuclear weapons, and it might tease out whether that's accurate or not. Well, okay. I think almost got 1 hour time. Uh, you mentioned that you were working on your second book. Any updates on the second book and what it's going to be? Like a part two of the first book? No, not really. It's kind of a standalone. Obviously, it builds upon that. Like I said, I've learned a lot. I've always called this an evolving project because I've learned a lot over the course of the last 3 years and talking to people and just thinking about this in new ways. So it builds upon that foundation laid out in the first book, but it also is meant to be a standalone entity. And basically, it's a case study of case studies, looking at patterns and trying to identify what we can learn from these patterns and how well this extratempestrial model, this time travel model, fits with what we're seeing in the patterns in these data, mostly from abductees, contactees, experiencers in general. But then also looking at that in the context of the extraterrestrial hypothesis, interdimensional simulation hypothesis, ultra-terrestrial, these other explanations for the phenomenon, to see whether or not this time travel model can explain more or as much as some of these other ones. So it looks at individual case studies, some well-known, some lesser known, some that probably aren't known at all. And then, yeah, just kind of assesses it in the context of what we know now, what we know of our evolution, our technology, our culture, and then providing this cross-cultural and cross-temporal perspective in the context of these case studies. So it's done. The book's done. I'm just recording the audio book right now, about halfway through that. I hope to have it published on Audible May 1st. And then the paperback and ebook will be a little bit behind that, probably June 1st for that. So I think this is the first place I've actually mentioned that. So it's new information. Oh, wonderful. I'm actually looking forward because I'm in contact with you for a couple of months on. I think I was the one question I always wanted to ask: when is your book Audio coming? book, yeah. Audio book. And Yeah. so No, I know you are busy. Yeah, I know it's a difficult schedule. It's a nightmarish process. Oh my God. Reading an entire book. And you end up reading it like 5 times because a dog will bark in the background, or you make a little click sound with your tongue or something, and you got to re-record it. So yeah, it's not just reading through the book and then all of the editing, the post-production, but I'm still hopeful to have it out by May 1st. Okay, I have a question from one of my friends who's watching right now. He just saw your jacket behind it. It says FARTCO at the back. He wanted to know what's that. Oh, Fartco. Yeah. Let's see if I can stretch that far. It's actually an acronym for Forensic Anthropology Recovery Team of Central Ohio. Okay. So we do, it's a joke, obviously, because we wouldn't actually call ourselves Fartco. But I teach a forensic anthropology class here, and we just got done digging up a skeleton that some other students made into a crime scene. And we called ourselves, I think, Tech Fart, for the Tech Forensic Anthropology Recovery Team. So it's kind of a funny acronym because it does spell out, what you need it to. But yeah, that's one from where I went to grad school in Central Ohio. So that's funny. I forgot that was back there. Okay, just one more question, if you allow me, please. I forgot one thing. Is it possible that these time traveling, we talk about this huge energy cost, if you will, that
maybe they say, okay, let's put something in the past so we don't have to go back use these machines every time. So we put a machine in the past, it's buried there somewhere. Is there any possibility, because we heard these stories that these machines like Bob Lazar, you probably know him. He said he walked on a alien machine where an American flag was on a saucer-shaped aircraft. So in Yeah. context of flying machine, is it quite possible that we may find something like an archaeological dig and we say, okay, we have found this old machine 5,000 years old, but it probably was from the future, and they just place there in case if they have to go back, just a backup, because we do Yeah. this kind of things. I mean, that was kind of the plot in the last Indiana Jones movie, the one with the crystal skulls, where this thing was buried and it came out just like a UFO. And I was like, oh, sweet, they're going to blow this open. But nobody really pays attention to these things. But yeah, it's certainly possible. I wouldn't be surprised if the US already has the ability to fly these things. I'm sure we've been making them and flying them. And there's a lot of videos from around Area 51 that indicate that that's true too. But again, nobody can know. But yeah, one thing I sort of think the triangular UFOs, especially the massive ones where they abduct a lot of people at the same time and walk them through these I think like call it a fertility factory or something in the new book. But I have a feeling that does not have the capability of going back in time. I think that's probably something that they built in our time to use for a specific reason. It serves a function, but it doesn't have the function of traveling through time. I think they use the disc-shaped craft for those. They have a form consistent with a function of backward time travel. There's also many who argue that they were taken to a base on the moon. I know it sounds insane, but again, looking at patterns, you see that same thing mentioned, and the descriptions of this base are so similar too. And again, that's something you could build in a specific time period in a place where people aren't aware of it. We stopped going to the moon. Why? It seems like someplace we would keep going back to if we'd gotten there and it was such this monumental achievement. But if something's there that we're not supposed to see, that's a good place to do it because we can keep pretty much anybody from going there. So I know it sounds crazy, but you see that stated enough by people who have been abducted, and you kind of got to start to say maybe there's something to that. Well, it's a fascinating subject, and we can definitely speak hours and hours on it. But friends, that's the whole time we have. Unfortunately, maybe if my future descendants give me some kind of technology, hey, if you're listening, I want this technology so I can stretch this time according to my will, so I can do a lot of things. Well, thank you very much, Dr. Masters. It was a pleasure. It was a wonderful, learned a lot of things from you. And for me, the main thing was that you are working on your second book, and I am now happy. I'm a happy guy that the second book is coming. Very soon, less than a month, in fact. So yeah, no, it's great talking with you too, and appreciate you having me on. It was a great conversation. So take care. Thank you very much, and I hope to see you maybe next time or in the future. Absolutely. Cheers. Good day, sir. Bye. All right, folks. ये थे डॉक्टर माइकल टी मास्टर्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था और सवाल बहुत सारे थे. तो आइए जी, पहले तो आपका शुक्रिया, और एनी कमेंट्स अगर आप कुछ करना चाहे तो. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक थी शाह जी. ऑलमोस्ट हमारे सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस जो थे हमने डिस्कस कर लिए, इंक्लूडिंग लाइक आर गॉड्स, हाउ दे कैन बी परसीव्ड एज पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन. यस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स थी. तो वो फौजी सील ने बड़ा अच्छा पिक किया. मैंने भी गौर नहीं किया, हालांकि वो सब उस वक्त सारा वक्त हमारे सामने थी. बट लेकिन चले. आपकी फौजी हैं वो, eyes उनकी आंखें तो अच्छी होनी कैची चाहिए. कैची है, वही आ गए, उनसे पूछते हैं, बड़ी कैची आदमी है. हाँ जी, फौजी सील साहब, आप बड़े बड़े चालाक आदमी यार. आपने कोई बाइनोकुलर्स रखी होती है अपने पास, आप बड़े. सर आपको तो पता है, मैं तो बचपन से होशियार हूँ. हाँ, और फिर आप फौज में भी थे जी. तो वो एक्स्ट्रा हो गए फिर तो आप.
जी जी नहीं अच्छा सवाल, मैंने भी गौर बाद में किया, मैंने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल, मैं पहले सोचा था ये कोई मजाक तो नहीं करे क्योंकि उसमें फाट था ना, तो जी मैं जी डर रहा था, मैंने कहा ये फाट वाला की जोक वो कहेगा यार अच्छी खासी हम सिविलाइज गुफ्तगू कर रही है, फाट वाला जोक कहाँ से आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा उसको खींच, थैंक यू वन बार वो लिंक आपने, लेकिन इससे वैसे नहीं जबरदस्त। मैंने तो मैंने यहाँ प्रोफेसर्स को देखा है अमेरिका में, वो बड़े खुले डुले होते हैं जनरली, और आप उनसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो वो बुरा नहीं मनाते। तो यार हमें बुरी आदतें पड़ी हैं पाकिस्तान वाली, तो आप समझा करें ना हमारी थोड़ी। अच्छा आप अमेरिका में रहते हैं, हम भाई। अच्छा, मैंने डॉक्टर मास्टर से ये पूछना था कि ये एलियंस और ये जो है अल्लाह है, खुदा है, ये मुझे लगता है कि ये एक ही तरह का थॉट प्रोसेस है। ये ना हमसे आके बात करना चाहते हैं, ना हमें कोई अपना सॉलिड प्रूफ देते हैं, ये खाली हवाई बातें करते हैं। हाँ I would have loved to listen to his, thoughts about this, लेकिन वो आपने मौका ही नहीं दिया, आप इतने जालिम नहीं, आदमी हैं। असल नहीं, मैं इनसे जो है ना काफ़ी अरसे से वो कर रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ ईमेल के ऊपर। तो ये यार एक तो ये प्रोफेसर है, एक तो प्रोफेसर है, इनका एक यूनिवर्सिटी की जॉब है, दूसरा ये आजकल जो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बिजी रहे, तो ये बड़ी मुश्किल से आज भी जो है, ये मैंने 3-4 दफ़ा पहले प्लान किया था, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से जो है ना वो मौका नहीं मिलता था, फिर कभी कोई उसको पड़ जाता था। तो इस दफ़ा उसने कहा कि हाँ मेरा एक, अभी वो जैसे शुरू में बता रहा था कि उसका कोई इम्तिहान था, आई डोंट नो उसने लाइफ में था ये पहले जब थे, तो इसके पास 1 घंटा है, तो फिर मेरे पास असल में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने ये रखा हुआ था कि मैं ऑडियंस को भी लूंगा और उसका सवाल लूंगा, लेकिन वो आज मुमकिन नहीं था, इसलिए फिर हमने कहा सारे सवाल जितने हम कर सकते हैं कर लें, बाद में इसने हाथ में नहीं आना। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हमने किसी को नहीं लेकर आना था, नहीं, वो कुछ प्रैक्टिकल और टेक्निकल रीजन आप समझ लें, जी वरना आपको मुझे पता है, मुझे पता है, आपको पता है, मैं तो हर एक को ले आता हूँ अपने चैनल पे। जी मुझे आइडिया है, मैं तो ऐसे आपका तवा लगाने के लिए, आपको तंग करने के लिए कर रहा था। मुझे आइडिया हो गया था हाँ, कि अगर आपने लिंक नहीं दिया तो दैट मीन्स टाइम क्रंच है। और बात भी हम टाइम ट्रेवल की कर रहे थे और फिर भी टाइम क्रंच था, देखो यार। सो ट्रू। हाँ, तो तो अच्छा, मुझे आप, ये बता, जी सॉरी गो अहेड। ओवरऑल आप, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें या कोई सवाल इसके ऊपर, आप जो आप सुन रहे थे। क्या मैं इस पे कमेंट करूं? मैंने इस पे पढ़ा तो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज कोई 4-6 देखी हैं, लेकिन हम्म, वो बहुत ही कोई घटिया और अम, क्या उसको कहते हैं, जीरो एविडेंस वाली, मतलब वो इतनी बुरी होती है कि मैं 20 मिनट के बाद उसको बंद कर दिया था। तो हम्म, टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस। इफ देयर इज एलियन लाइफ फॉर्म एंड इफ इट इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, तो उसको हमसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर उसने नहीं किया है तो दैट मीन्स कि वो either it doesn't exist or it's not smart enough to, हाँ, you know फौजी सीरियल जी, आप फौज से हैं तो आपसे ये बात की जा सकती है। सो शीजिन लिू करके चाइनीज़ ऑथर है साइंस फिक्शन, उनकी एक बुक सीरीज़ है जिसको थ्री बॉडी प्रॉब्लम कह देते हैं, कोलोक्वल लैंग्वेज है। उस बुक की सेकंड बुक में एक डार्क फॉरेस्ट करके एक थ्योरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि लाइक अंधेरा जंगल है, तो उसमें आपको सिर्फ चुप रहना है। अगर आपने चूं की तो शिकारी आपको उड़ा देगा। तो उसी तरह से वो यूनिवर्स को भी ऐसा ही समझा जा सकता है कि अगर आपने अपनी प्रेजेंस को अनाउंस किया तो कोई ना कोई आपको उड़ा देगा। नहीं तो और हाँ, नहीं, सॉरी, गो अहेड, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो उड़ाने वाला है उसने भी अगर अपनी प्रेजेंस दिखाई तो उसको कोई उड़ा देगा। तो इस तरह का लाइक एपेक्स प्रेडेटर वाला गेम यूनिवर्स में चल सकता है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो वो एक सॉरी, एक आप मॉडल है। सॉरी कंप्लीट कर लें, मैं समझा आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो ये एक मॉडल है जिसमें समझा जा सकता है कि क्यों कोई कांटेक्ट नहीं करेगा हमसे। हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब से टेलीविजन और रेडियो आया ना, हम नॉन स्टॉप स्पेस में बीम कर रहे जी हैं। जी, सिग्नल हम भेज रहे हैं। हमने 2 प्रोब्स भेजे हुए हैं आउटर, वो अब तो, जी, वो क्या, वो इंटरस्टेलर वॉयजर वन, स्पेस, वॉयजर वॉयजर 1, वन, वॉयजर 2, वो जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ या और उन पे हमने वो डिस्क्स लगा के भेजी हुई है, गोल वाली, कि हाँ जी हम ये हैं और यूं हैं, और यहाँ रुस्तम शाह साहब का एक चैनल है, और हाँ आईओ साहब यहाँ रहते हैं, और वी आर एक्टिवली सीकिंग। तो आई थिंक
कि हम, और फिर हम जो जो हमारी टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं वो बाहर जा रही होती हैं, और अगर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है और उसने रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट वो की है, बना ली है, तो वो भी एक्टिवली ना भी एक्टिवली कर रहे हो तो थोड़ी बहुत रेडियो लीक हो रहा होगा, and it might be traveling through space. So हाँ, to as a theoretical concept, वो जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही डार्क कोई फॉरेस्ट। वो सिगरेट जलाएगा हाँ, सोल्जर अंधेरे रात को अंधेरे में फॉरेस्ट में, तो तो वो हाँ, सामने से फायर उड़ आएगा, जाएगा। which is theoretically बहुत अच्छी बात है, बट हम तो एक्टिवली सीख कर रहे हैं कि जी आओ हमारे मत्थे लगो, so हाँ, तो but उस nobody seems to be willing to talk to us. उस सीरीज में एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा हूँ कि दे फाइंड समथिंग एंड some guys from those sides say कि don't make noise and they do, बस इतना ही कहूँगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है वो। Mhm. और अच्छा फौजी सिविल आप मुझे नहीं पता आपकी जो डिप्लॉयमेंट थी वो किसी हसास मिलिट्री कॉम्प्लेक्स या लेकिन आपने कभी जब आप मिलिट्री में थे कोई ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में सुना जिस पर लोगों ने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ थी, या जैसे अमेरिका में बहुत होता है वो कहते हैं कि जी हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स थे, मैं भी उससे ये मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार आप लोगों की तो हर वक्त कोई ना कोई इस पे बड़ी स्टोरी चल रही थी, हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली उसमें रहे हैं। हाँ, कभी आपने कुछ ऐसी कोई कहानी सुनी या यार पता नहीं क्या चीज थी किधर गई, या कोई याद पड़ता आपको? जी मुझे याद पड़ता, मैं 2-3 आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक चौकीदार था स्पार्को का, स्पार्को का पता है ना आपको, स्पेस एंड या अपवर यस एटमॉस्फेयर रिसर्च यस कमीशन, उसका एक चौकीदार था। तो ऐसे ही हम रात को दोस्तों शोस्तों के साथ उधर गए हुए थे स्पार्को का चक्कर लगाने, तो हम बाहर खड़े होके सूटा मूटा लगा रहे थे, तो वो आया, चौकीदार आया, तो हमने उससे ऐसी गपशप लगाई, तो उसने कहा कि जी उसने जो है ना कुछ देखा था यहाँ ऊपर उड़ते हुए, और उसकी बड़ी लाइटें माइटें थी और ये वो। मैंने उसको काफी प्रोब किया कि जी अच्छा बताओ मुझे उसकी शेप कैसी थी। मैंने उसको ना वो छोटा सा, मेरे पास उस जमाने में वो होते थे, फोन तो नहीं होते थे, वो जो याद है आपको, हम जेब में डायरियां लेके घूमते पेजर थे, पेजर फोन, नहीं हाँ नहीं हाँ डिजिटल पेजर डायरी, नहीं, वो हम डायरी लेके घूमते थे जेब में डिजिटल कि डायरी, फोन नंबर, नहीं नहीं नहीं, डिजिटल कैलकुलेटर डायरी डायरी। भी नहीं, डिजिटल डायरी भी पेपर, नहीं, हाँ पेपर डिजिटल डायरी डायरी तो होती थी, पेपर वो डायरी होती पेपर थी, हाँ डायरी होती थी, हाँ डिजिटल पेपर डायरी तो डायरी। इतनी मोटी सी और बड़ी सी होती थी, वो भी थी मेरे पास, बट वो जो पेपर डायरी जितनी प्रैक्टिकल थी ना, उसमें से मैंने वो निकाल के पेजेस को ड्रॉ करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कुछ बात नहीं बनी। एक तो ये एक ये इंसिडेंट है जो मैं पाकिस्तान से जानता हूँ। दो हवाबाजी के महकमे के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहानी सुनाई है, बट अगेन वो कंक्लूसिव नहीं थे। वो ये थे कि एक मैं सर्टन उसमें जो है फ्लाइट पाथ पे जा रहा था, तो मुझे कुछ नजर आया, और आई हैड टू सडनली मूव माय योक। और ये रेडार पे दिखते हैं ये नहीं ऑब्जेक्ट्स दोनों, रेडार ये जो जो पहला अभी जो मैंने इंसिडेंट बताया, ये उसमें था, क्या विजुअल है, रेंज में? विजुअल उसमें था, विजुअल रेंज में था, वेरी क्लोज, अराउंड if I remember correctly, कितनी can't रहती remember, है, 700 40-50 फीट? 700 feet, अच्छा इतना uh, पास। yes, नहीं नहीं 700 feet altitude हाँ। 700 feet, और स्पीड का कोई आइडिया नहीं क्योंकि रात का टाइम था। हम्म, हाँ वो रेडार पे विजुअल नहीं था, और वो जो था जो जिस चीते ने मुझे बताया वो था को पायलट था, ओके तो ओके। यानी एफओ था। और दूसरा जो इंसिडेंट है वो पायलट ने बताया हुआ है, और उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उसने यू नो he saw something, he took an evasive maneuver, but nothing conclusive, nothing showed up on the radar, all instruments were okay, uh, you know it wasn't like कि artificial horizon नहीं काम कर रहा था, वो upside down flying कर रहा था, और इस तरह का कोई क्योंकि सीन भी नहीं इस तरह का। हाँ शाहजी, हम लोगों ने MS-370 की बात की ना, तो ये ऑब्जेक्ट तो उससे भी बड़े होने चाहिए। तो ये हाँ वाले तो इस तरह के नेटवर्क्स में डिटेक्ट हो सकने की पॉसिबिलिटी है अगर, लेकिन ये रेडार पे डिटेक्ट नहीं होते तो क्या ही मतलब विजुअल ही है एक ऑप्शन इनको देखने यार का। मैं अभी जैसे अभी रे ने भी एक सवाल किया, तो मैं भी ये सोच रहा था, ये एक बहुत अहम सवाल है। जैसे मैंने उससे पूछा था, मैंने ये मेरे ख्याल में उससे, आपको याद होगा कि हमारे जो जो एंसेस्टर्स थे ना, उनके जो
उनके जो एलियंस हुआ करते थे, इफ यू विल, वो जूस थे, वो अपोलो थे, वो थोर थे और इस तरह के और गॉड्स थे, लेकिन वो सारे इंसानों जैसे लगते थे। मतलब जैसे अभी इसकी जो हाइपोथेसिस है कि जो ह्यूमन जो फ्यूचर के हैं, वो भी हमारे जैसे, चूंकि उनकी शक्ल हमारी जैसी है और वो सारे उसको डिस्क्राइब करते, तो शायद वो हमारे ही डिसेंडेंट्स फ्यूचर से आ रहे हैं। तो मुझे ये शक पड़ता है कि हमारे अंदर ये है, हमारे इंसानों में ये थिंकिंग में कि जी हम इस तरह की चीज़ें बनाते रहे हैं, हमारा एक पास्ट है, मतलब हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हमने इस तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये इतनी सारी जो टेक्निकलिटीज़ वो बता रहे थे, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, और इसके पीछे सिंपल एक ये फैक्ट हो कि जी हमारी जो ये इमेजिनेशन है, वो बस टाइम के साथ साथ वो भी बदलती रहती है, उसमें भी एवोल्यूशन होती रहती है। तो वो जो पहले हाँ, थॉर हुआ करते थे, अब वो हमारे एलियंस बन गए। और एलियंस में भी दो टाइप आ गए हैं ना। एक तो हाँ ये छोटे वाले एलियंस है, और उन्होंने एक ये भी कहा कि रीसेंट पास्ट में जो देखे हैं वो लाइक नॉर्मल ह्यूमंस टाइप के एलियंस हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, ये भी है। तो इट सीम्स कि जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है या हमारी एवोल्यूशन हो रही है, तो इन स्टोरीज की भी एवोल्यूशन हो रही है, और एक बड़ी क्लियर कट एवोल्यूशन होती है। मतलब अब जैसे बाइबल है या कुरान है, उसके अंदर ये जो डीमंस हैं, एंजल्स हैं, ये अगर आप डीमन और एंजल्स को हटा के एलियंस लगा दे आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बिल्कुल फिट होगा। आप कह सकते हैं कि हाँ जी वो एलियन था, वो किसी और प्लेनेट से आया था, तो और उसने जो है वो इज़ीकियल के साथ ये किया और उसने इसको देखा, और इज़ीकियल ने वो देखा, वो जो टायर जो एक वो सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट था वो उतर रहा था, तो वो उस वक्त उसको पता नहीं क्या लगा। आज हम उसको कहेंगे यार वो तो सिंपल सिंपल सी बात है, वो यूएफओ कह रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ सिंपली जो है ना, इसकी जो पीछे एक सिंपल सा एक ट्रूथ हो, बहुत सिंपल सा, हम उसको ऐसी वो बना रहे। लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये कि आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये भी पॉसिबल है उसके साथ साथ कि हमारे फ्यूचर में हम इतनी तरक्की कर जाएं। जैसे अभी हमने बात की थी कि 1900 में, सन 19 के आसपास जो है, राइट ब्रदर्स ने जो है वो फ्लाई किया था कुछ 100 फीट, और कोई 60-70 साल बाद आप चांद पे भी पहुंच गए। तो मतलब इतनी तेजी से तरक्की, तो ये भी पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है एकदम, कि हाँ हमारे फ्यूचर जो ह्यूमंस होंगे, आपके जो बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे, वो टेक्नोलॉजी में वाकई इतने आगे होंगे कि हो सकता है वो ऐसी चीज़ बना लें। और फिर हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रू पोटेंशियल है वो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते एट द मोमेंट। मतलब हम गेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो जो जिस तरीके से वो दुनिया को चेंज करेगी और जिस तरीके से वो तब्दीली लेकर आएगी, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है आज से 1000 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस इतने आगे हों कि ये टाइम मशीन है उसके लिए वाकई एक बच्चों का खेल हो। क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में हम बलून्स पे उड़ा करते थे, हॉट एयर बलून्स पे, आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप चांद पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप अगर कह भी देते ना, तो लोगों ने आपको पकड़ के जला देना था उस जमाने में। तो ये भी होता था कि ये विच और ये जो कोई जादूगर है, इसको पकड़ के जला दो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियसली। तो ये एक इसमें बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इसका। वो बलून्स के टाइम में शायद किसी ने लिखी हुई थी स्टोरीज चांद पे जाने वाली। हॉट एयर बलून्स की बात कर रहा हूँ, दूसरा हाँ, दोबारा मत समझ लीजिएगा। आई नो, मुझे पता है, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, ये इंसानों के अंदर ये हमारी है, ये एक हमारे अंदर ऐसी, मैं क्या कहूँ इसको, सलाहियत है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हम उसके जो है ना मायने निकाल सकते हैं, उनके साथ चीज़ें जोड़ सकते हैं, और इस चीज़ ने हमें बड़ा फायदा भी दिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक गुब्बारा देखा उड़ता हुआ, हॉट एयर बलून, और किसी ने चांद देखा, तो उसने कहा यार ये उड़ रहा है और उसी तरफ जा रहा है। अगर वो चांद और वो दोनों उस फ्रेम में हो, उस विजुअल फ्रेम में हो, तो ये बड़े आराम से कनेक्शन एक इंसान बना सकता है। यार चांद पे भी चले गए, तो ये कहानी बन सकती है। और हमने हमेशा ये किया है। हमने बाज़ औक़ात, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक मोटर बना ली, अब जैसी इलेक्ट्रिक मोटर बनी उसके साथ हमने कितनी चीज़ें बना ली, पंखे बना लिए, पेडेस्टल फैन बना लिया, हमने वॉशिंग मशीन बना ली, हमने जूसर बना लिया, हमने पता नहीं क्या कुछ बना लिया। और वो इंडिपेंडेंटली शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें एक चीज़ मिली, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमारे अंदर एक सलाहियत है। तो इंसानों को ये कह देना कि यार अभी हम फतह हो गए, तरक्की से गायब हो गए, नहीं।
इस हद तक तो मैं मास्टर्स से एग्री करता हूँ माइकल मास्टर से, कि वो सही कह रहा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जिस तेजी से तरक्की कर रही है, जिस तेजी से चेंज हो रही है, ये तो आई मीन इसको तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आइंदा एक फ्यूचर में पॉइंट क्या हो उन्होंने सकता ये भी हाईलाइट किया था कि हमारा जीन कल्चर को एवोल्यूशन होता है, जिसका उन्होंने लैक्टोज का एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन और ह्यूमन के पाले हुए एनिमल्स, दीज आर द ओनली वंस जो एडल्ट होके भी दूध पचा सकते हैं। है। बाकी में वो जीन शट ऑफ हो जाती है बचपन के बाद, बाकी एनिमल्स में। तो कुत्ता, हम्म, बिल्ली और ह्यूमन, यही तीन है जो एडल्ट होके भी दूध पचा सकते हैं दूसरे जानवरों का। हाँ। तो और ये जीन और कल्चर ये एक साथ इवोल्यूशन होता है उनका। जैसे केन्या में जो है रनर्स हैं, उनके लंग्स बड़े होते हैं। इंडोनेशिया के कुछ स्विमर्स होते हैं, वो लाइक 12-12 मिनट तक डाइव मार सकते हैं पानी के अंदर में। हाँ। तो ये कल्चर के साथ इवॉल्व हुई ये सारी चीज़ें। और थोड़ा सा मैं इस पे मैं भी इलेबोरेट करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है वो डॉक्टर मास्टर्स इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हम नेक्स्ट फ्यू सेंचुरी में अगर हम इंटरप्लानेटरी स्पीशीज डेफिनेटली बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और चॉइस कोई नहीं है। तो फिर जब फिर आप क्या होगा? मार्स पे रहेंगे तो फिर आप यू वुड सी लीप्स एंड बाउंड्स, जो आपका यू नो एवोल्यूशन का वो है हाँ, फिर सिस्टम है, फिजियोलॉजी चेंज हो it'll जाएगी just ह्यूमन्स की। drastically change। फिजियोलॉजी शाहजी, चेंज हो जाएगी। पतले एग्जैक्टली, लंबे हो सकते हैं ह्यूमंस, एग्जैक्टली, ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे तो। यस, कम है तो हम लंबे लंबे हो जाएंगे। शाहजी जो है वो 6.5 फुट की हूर। ब्लड प्रेशर ओ, बदल जाएगा। ये देखा शाहजी, ये अब मैं इसमें आपको इस्लाम डाल के दिखाता हूँ। क्योंकि जब आप शाहजी मार्स पे रहेंगे, लेट्स से कि एक नए हम्म, शाहजी पैदा हो गए 200 हम्म, साल बाद और वो मार्स पे हुए, वो जो 6.5 फुट वाली हूर है ना, 650 फुट वाली वो जो है हूर, वो हाँ, क्या है, तारिक जमील वाली, आप फिर हाँ, वो उसके साथ जाके मिंगल एंड डिंगल करेंगे। समझ आई कैसा फिर? तो फिर कुरान हाँ। ठीक है ना, ये तो इसका मतलब है। यार कुरान इस्लाम तो फिर बहुत आगे है भाई। तो ये 90 फुट वाली जो आदम था, इसका मतलब वो भी ठीक है। वो हो सकता है किसी और प्लेनेट पे हो। जो प्रॉफिट हाँ हाँ, मोहम्मद है वो उसका बिल्कुल। जिक्र कर रहे हो कि भाई 90 फीट का है, तो वो जो लिखने वाला था उसने सिर्फ प्लेनेट भूल गया उसके अंदर से, उसने कहा यार ये पता नहीं क्या जी बात करे, तो उसमें ओमिट कर देता हूँ अपनी तरफ से। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद आपको बताते वो तो मार्स पे था जी, 90 फीट लेकिन का। वो हजरत आदम की कब्र यहाँ है, आपको पता है ना, वो जो एक लंबी सारी जो, और उनके पाँव का निशान भी यहाँ है। पैदा वो वहां हुए लेकिन वो मरे यहाँ आके। तो ये इसका तो मतलब है खैर, कि उनके पास भी रॉकेट था। वह ड्रामे भी तो करने होते ना, आपने कुछ बेचना भी तो है ना, आपने अपनी दुकान भी तो चलानी ना। अगर वो इतना सिंपल सा आप रिलीजन बना देंगे हमारे जैसे, हमने कोशिश की थी मैंने और हाइपर एक्टिव ने, वो दूसरा हफ्ते फेल हो गया। हमने इसमें कुछ मसाला ही नहीं डाला, हमने इसको बड़ा वो टेक्निकल रखने की कोशिश की और वो चला नहीं। आपने उसका नाम, सबसे पहले तो उसका इसलिए नहीं चला, मैं बताता हूँ, क्योंकि उसका आपने नाम ही कैची। अच्छा नहीं रखा। कोई अच्छा सा उसका अट्रैक्टिव सा नाम रखे ना पहले, बेस हम्म, लाइन तो ठीक हो। हम्म। आयो जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, एक एक दिमाग में और भी बात आई थी कि जब हम लोग पुराने जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें ये जो जिस तरह के एलियंस वगैरह की बात करते हैं, तो मेरे पास एक उड़ने वाली चीज़ों का है। अ, हमारे एक टेक्स्ट में है उड़ने वाली चीज़ों का एग्जाम्पल। तो रामायण के अंदर में देर वॉज अ कुबेर गॉड, जो पैसों का गॉड है रफली। और हम्म, उसके पास था एक फ्लाइंग प्लेन। रावण ने उसे छीन लिया था। रावण कुबेर का भाई था टेक्निकली, उसने उसे छीन लिया था और वो उस हाँ। पे उड़ता था। और वो सीता को सेंट्रल इंडिया से उठा के श्रीलंका तक ले गया था उसी प्लेन में। तो वो एक एग्जांपल है उड़ने वाले ऑब्जेक्ट का, जिसको आप टेक्निकली एक यूएफओ कह लेकिन सकते वैसे एक सवाल ही पैदा होता है, ये फॉर एग्जांपल हमें पता है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और ये तरक्की कर रही है, और मुझे इसमें शक पड़ता है कि हो सकता है फ्यूचर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें टाइम ट्रैवल डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। जैसे अभी हमने कहा ना कि अगर एक दफ़ा एक इंसान एक कॉन्सेप्ट ले आए तो उसके अंदर फिर जिद्दत ही पैदा होती है, वो आप उसको गायब नहीं करते। जैसे जहाज़ बना था, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते थे, आज भी जहाज़ है लेकिन उससे बहुत अच्छा है। जिस तरह कंप्यूटर्स है, अब कंप्यूटर से आगे हम सोचे क्वांटम कंप्यूटर्स। तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप जो मर्जी कर लें, कंप्यूटर्स का किसी न किसी हद तक हमारे फ्यूचर में भी हाथ रहेगा, आप उसको गायब नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो फिजिक्स है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइम ट्रेवल है, क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स। इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इसको आप सिर्फ इवॉल्व करेंगे और इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो हैं। चाची मैं ये हाँ। सोचता हूँ कई दफा कि अगर एक दफा हम्म, हो जाए तो हमारे इंसानों में होती है ना चुल, होती यार जाके देखे तो सही होती। अब हाँ बना जी। लिए तो उसको क्या, उसको रख के क्या करेंगे? हाँ।
टाइम ट्रेवल के साथ में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी यूनिवर्स किस टाइप की है, मतलब मल्टीवर्स का पार्ट है हम लोग की, लाइक सिंगल लाइक ब्लॉक यूनिवर्स है हाँ जिसमें बेसिकली कंप्लीट जो है कॉजेशन की चेन है, डिटर्मिनिस्टिक है। तो या वो ये जो एक सवाल उठता है, अगर या डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो जिस टाइप का टाइम ट्रेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। अगर लाइक मल्टीवर्स है तो फिर आप पास्ट में गए, किसी और का पास्ट निकल आया, यानी आपका हाँ फ्यूचर गायब हो जाएगा, फिर आप मुझे नई लग टाइम लाइन में पहुंच जाओगे। शाहजी और आयो साहब ये मुझे समझाएं, मल्टीवर्स वाला मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, और उसका रीजन ये कि if there is another universe, where does it exist? वो आप क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा है ना कि सुपर इम्पोजिशन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है कि एवरीथिंग दैट कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन अ प्रोबेबिलिस्टिक स्पेस। ये सुपरपोजिशन आप होता जानते हैं ना, जी जी जी। एवरी स्टेट, और वो आप कोई ऑब्जर्व करता है तो वो रियलाइज होती है, मटीरियलाइज होती है वो, यानी Yes, I कोलैप्स कर agree. जाता है वेव फंक्शन। Exactly, I agree. Yes, तो that's what I've मैनी read. वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी कुछ कुछ इसी से कनेक्ट करता है, मैनी वर्ल्ड, और उसको अगर मल्टीवर्स, स्ट्रिंग थ्योरी के मल्टीवर्स से कनेक्ट करते हैं। मैं और मैं उसको, थोड़ी हाँ सॉरी गो। हाँ, तो उसको स्ट्रिंग थ्योरी के मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं, यही जो प्रोबेबिलिस्टिक वाला, कि जी जी अगर, जी आयो, इसमें ये भी तो है ना कि जिस तरह यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कर रहा है। लाइक अभी तक वी डोंट हैव द क्लियर पिक्चर। हाँ वो वो तो एक अलग सेल्वाडोर, चीज़ है। मेरी बारी थी, आप बीच में आके जो आपने फ्लाइंग किक मारनी शुरू कर दी है। लुच सॉरी। भी तो लुच I'm लुच kidding, I'm kidding, please. इसको कहते हैं लुच तलना। हाँ, लुच फ्राई आपने करना शुरू कर दिया। I'm kidding, my brother. बुरा मत मनाइएगा प्लीज। हाँ मैं चुप हो जाता हूँ फौजी भाई, आपको पता है पाकिस्तान में फौजियों से डरना पड़ता है। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मनाई। अच्छा, मैं सॉरी, लेट मी हाँ रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मुझे इसलिए नहीं हजम होता, एंड आई थिंक आई एम राइट, हाँ कि जब आप इस डायरेक्शन में सोचते हैं ना कि जी मल्टी यूनिवर्स है, तो फिर उस मल्टी जो आपका जो लेट्स से आप ए हैं, नेक्स्ट इज A1, A2, A3, A4, A5, तो उस A1 का भी A2, A3, A4 होगा। फिर यस, वो ये जो आप समझ गए। सॉरी, तो जो आप अमाउंट ऑफ मटेरियल सोच रहे हैं, इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो दूसरी यूनिवर्स में से आएगा। हाँ, क्या वो कहाँ है, ये एक आप सवाल सोच रहे होंगे एग्जैक्टली। कि वो है कहाँ। तो ये कहते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो सुपर इम्पोज्ड स्टेट में है, और जब वेव फंक्शन कोलैप्स होता है तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी दिखती है। तो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि सारी चीजें एक समय एक ही टाइम पे चल रही हैं सब जगह, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक यूनिवर्स में आप मुझसे इसी सेकंड पे बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्स में शाहजी आपसे बात कर रहे हैं इसी टाइम पर, एक यूनिवर्स में डाली शाहजी से बात कर रहे हैं। ऐसी सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में एट द सेम टाइम। जो स्ट्रिंग थ्योरी का मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी को कनेक्ट करें तो ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन इस तरह से, मैनी वर्ल्ड और मल्टीवर्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो हम उसकी आई डोंट नो, आई एम प्रोबेबिलिटी का नॉट एक रियली छोटा सा कन्विंस्ड। हिस्सा है। आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड, इसलिए क्योंकि अगर ये if I'm thinking the math will fail, or it's bound to fail. मैथ एक्चुअली वर्क करता है, मैथ एक्चुअली वर्क करता है, हम लोग उसको वो नहीं कर सकते हैं, हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये बड़ा मसला है। मैथमेटिकली इट वर्क्स। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कहते हैं कि इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक थ्योरी इन फिजिक्स सो फार, तो उसके अच्छे खासे एविडेंस मौजूद है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था जब ये ब्लॉक यूनिवर्स की बात करते हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ब्लॉक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हजम करना, क्योंकि मेरे सामने ये क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स के इतने सारे एविडेंस मौजूद है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं कई दफा सोच रहा हूँ तो यार मुझे लगता है, आप मुझसे पूछे द फ्यूचर इज प्रोबेबिलिस्टिक, इट्स नॉट फिक्स। ऑफ कोर्स अब वो उनकी अपनी सोच है, मैं नहीं कहूँगा कि भाई वो क्यों सोच रहा है, उसकी कोई थिंकिंग होगी, उसने रिसर्च की है काफ़ी इसके ऊपर और काफ़ी लंबे रिसर्च की है इसने। अगर आप इसकी किताब पढ़े तो मैंने उसमें ये देखा, उसने इसको एक्सप्लेन भी किया उसने। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। हाँ, उनका व्यू पॉइंट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी से आया है, तो ह्यूमन सेंट्रिक डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी, तो वो ऑब्वियसली उसी से एक्सप्लेन कर पाएंगे ना इस फिनोमिना को, हाँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री और उसको आगे कैसे खींच के ले जाना है। क्योंकि वो फिजिसिस्ट नहीं है, फिजिसिस्ट होते तो वो पक्का मैनी वर्ल्ड या से इसको पकड़ते, सिमुलेशंस को या इस तरह की चीजों शाहजी, को पकड़ते।
शाह जी जी, सर। वो एक एक वो साइडलाइन वाला क्वेश्चन है, वो जो डॉक्टर मास्टर्स का जो आपने हेडसेट की वॉइस क्वालिटी देखी थी, मैंने पूछा हाँ हाँ, तो उनसे काफी पूछने, शानदार थी। यार शानदार नहीं, वो जो ऑडियो बुक्स वाली क्वालिटी होती है वो वाली हाँ, क्वालिटी थी। वो एकदम प्रो लेवल का था, ऑब्वियस सी बात है, उसी से यूज करते होंगे। मैं जो मेरा अ, है, जो मैं इस वक्त हेडसेट यूज कर रहा हूँ, वो प्रो लेवल का है, बट वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस उसके लिए, वॉइस कॉल्स और ये जो हम जो ये बात कर रहे हैं वो उसके लिए। लेकिन वो उसका जो डॉक्टर मास्टर्स का जो था, वो तो ऑडियो बुक्स वाला था यार, उससे पूछ ही लेते कि कौन सा है, भाई हम नहीं भी नहीं, ले वो लें वो। मुझे पता है, नहीं ये वो वाला नहीं है, मुझे पता है, मैंने इनकी एक तस्वीर देखी है। इन्होंने एकदम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की थी जिसपे ये अपनी जो ऑडियो बुक को रिकॉर्ड कर रहे थे पिछली वाली। तो इन्होंने अपने घर में ही सारा कुछ किया हुआ, तो वो जो माइक है वो दूसरा है, वो मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, वो इससे भी बेहतर है। ऑफ कोर्स होगा, बट ये जो आज ये हजरत यूज कर रहे थे, इट वाज, अच्छा द वॉइस क्वालिटी वाज फिनोमिनल। अच्छा। मैं शायद उसमें टेक्स्ट मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, उसके कंटेंट में मैंने गौर नहीं किया। अ, मेरे पास तो भाई वो सिंपल सा चाइनीज़ माल है, काम चलाने वाला हिसाब किताब है। तो लेकिन ऑफ कोर्स, तो लेकिन आप जो यूज़ कर रही है वो ब्लूटूथ वाला है या केबल वाला है? नहीं, मेरा ब्लूटूथ वाला वो केबल, मैं बता, ये प्लांट्रॉनिक्स एक अच्छा ब्रांड है, ओके। उसका वो है, और वो इट्स हुक्ड अप टू माय लैपटॉप। और क्योंकि वो नाउ, और प्लस वो जो उसका बेस, आप बेस स्टेशन कह लें, बेस स्टेशन जो है वो लैपटॉप के साथ हुकअप हुआ हुआ है, और बेस स्टेशन इज पावर्ड। और क्योंकि वो पावर्ड है, तो ये जो मेरा हेडसेट है, ये मैं पहन के अपने घर में कहीं भी, बैकयार्ड में कहीं भी चला जाऊँ, इट्स पावरफुल इनफ टू ट्रांसमिट एंड रिसीव। ओके ओके। नहीं, आपका भी आवाज़ अच्छी आती है, आपकी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम बेहतरीन साफ है। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलते, आप बड़े आराम से नॉर्मल टोन में बात करते हो, तब भी क्लियर कट आ रही होती है। और इससे ये जाहिर होता है कि अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो ये काफ़ी लाउड भी हो सकती है, मतलब आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आप बाहर भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ हवा तेज चल रही है या जी बारिश हो रही है, तो आप बाहर भी अगर खड़े होंगे तो आपकी आवाज़ साफ आएगी इसके अंदर। जी, इसमें वो लश्कारे मश्कारे सारे हैं, चैनल्स और वो वॉइस, वो एम्पलीफिकेशन, वो सारा सब कुछ है। बट मेरा जो असल क्वेश्चन था कि वो जो डॉक्टर मास्टर्स का जो था ना, वो वो निकाल ऑडियो लेंगे बुक वो। क्वालिटी का वो था। अच्छा नहीं, वो असल में हुआ यही था, मैं वो जब ऑडियो बुक की बात हुई ना, तो मुझे वो याद आ गया, मैंने उनको ऑडियो बुक वाला सेटअप देखा हुआ है, उसके पिक्चर को मैंने कहीं देखा है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक दफ़ा शायद पोस्ट किया था, या इनकी जो यूनिवर्सिटी का पेज है उस पर कहीं था। मैंने कुछ 3-4 हफ्ते पहले देखी थी। मैं उनसे पूछ रहा था भाई ये बुक कब आ रही है, तो ज़रा उसको निकालो बाहर। तो उस टाइम पे शायद मैंने कहीं देखा था, तो वो ऑडियो सेट था कि यार बड़ा मुश्किल काम है, मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ फुल टाइम, और बाकी मुश्किल काम है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड। अब भाई हर एक आप फौजी सीरियल की तरह अमीर नहीं होता, लश्कारे वाले हेडसेट है, एसयूवी चलाते हैं भाई साहब। क्यों फौजी रे? फौजी भाई की आवाज भी रेडियो वॉइस है, वो जो होती है हाँ रेडियो वॉइस। ये बड़ी पॉलिश ओ किया हुआ नहीं है सब यार, कुछ। का क्या बात कर रहे हैं सल्वाडोर, ऐसे डिड्डू जैसी मेरी आवाज है, आप कह रहे हैं ऐसी। अब एमी आप मुझे जो चाहते आप हैं कि अब आप चाहते हैं कि हम आपकी और तारीफ करें। हाँ ऐसा नहीं नहीं नहीं, होगा भाई, थोड़ी तारीफ काफी है, बस इतनी काफी है। ओ नहीं भाई, साइंसदान आए मुझे कोई बोलेंगे नहीं, रेडियो वॉइस यार इनकी है, ये शाहजी की है, शाहजी की आवाज उनसे मिलती है, किससे भाई? मजहर अब्बास से। और रहने दो यार, पता नहीं किसने छोड़ दिए, मुझे उस ये दिन भी मैंने कोई ही कह छोड़ी रहा है था। भाईजान, ये मैंने की है। नहीं नहीं नहीं, आपके अलावा भी किसी और ने, या हो सकता है आपको सुन के किसी और ने छोड़ी हो। ये हैं? कंस्पिरेसी थ्योरी आपने शायद बनाई है। नहीं, ये मैंने बनाई है। मैं वही कह रहा हूँ, आप ही ने बनाई है, तो वो फैल गई है अब। तो वो अच्छा कहते अच्छा। हैं कि भाई तेरे में, और मैंने कहा है, और नहीं भाई मेरी ऐसी आवाज़ बिल्कुल नहीं है, मेरी बड़ी पोअर क्वालिटी की आवाज़ है। जब मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे होता है अरे यार मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ। असल में मैं हूँ कराची से भाई, मैं कराची में पैदा हुआ। बाज़ औक़ात जब मैंने देखा कि जब मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन मसला है कि चूँकि मैं कराची में पढ़ा, तो मेरी जो वो जो होती है ना, क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, वो इस तरह इवॉल्व हुई है उस माहौल में कि वो अब उसको ज़्यादा, मैं स्लो पे शायद बात नहीं कर सकता। हालाँकि अगर मैं स्लो बात करूँ, मैं आहिस्ता बात करूँ, तो मुझे लगता है मेरी बात लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। क्योंकि मैंने नोट किया, मैं जब जोश में होता हूँ ना, तो मैं बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देता हूँ, और वो अक्सर चीज़ें जो है ना, फिर वो ले गड़बड़ हो जी, जाती जी। है। लेकिन आपने कभी ओबामा को बोलते हुए देखा है? वो बड़ा आहिस्ता बोलता था, बड़ा रुक के, पॉज़ लेके। तो मुझे लगता है लाइक अगर आप उसके ऊपर काबू पा लें कि आपने कहाँ पे साँस लेना है, कहाँ पे पॉज़ करना है, मुझे लगता है ट्रेनिंग है एक किस्म की। इट डज़ अ, हैव एन हाँ, मगर ये मगर है। उसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि उसमें लगता है कि आप थोड़े अननेचुरल हो और वो लोग समझ जाते हैं।
स्पेशली इन पॉडकास्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल जो रोगन इतना कामयाब क्यों है? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो नेचुरल है। नहीं, वो सालों से आता है ट्रेनिंग कर करके, या अपने हुनर को होन करने के बाद वो होता है डेवलप। आप नहीं, किसी लेकिन को भी सुन लेगा लेकिन पॉडकास्ट आयो शुरू शुरू में आपको एकदम। हाँ, नहीं, आपको नहीं लगता कि लाइक लोग, आई डोंट नो, आप सही कह रहे हो हुनर, लेकिन आपको लगता है कि उसने पॉलिश किया कि उसने अपने नेचुरल अंदाज को? सालों से तो वो मीडिया में भी है ना, और उससे हाँ पहले वो स्टैंड अप कॉमिक था, तो लाइक उसका पूरा करियर ही है उसी चीज पे बोलने पे ही बना है। जी। तो ही इज एक्चुअली एन एक्सट्रोवर्ट, तो उतना ज्यादा और दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये जो उसको सॉरी होन करने में। सॉरी हाँ, आयो, ये जो यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, जो हाँ, पक्के वाले जैसे ये जो रोगन, ये मेरा ख्याल है पीछे वो कोई बैकग्राउंड सिंथेसाइजर, वॉइस फिल्टर्स, ये वो ये हाँ सारे हाँ, लश्कारे विश्कारे भी कर यूज सकते करते हैं। हैं आई थिंक। हाँ हाँ, उनका सेटअप तो अच्छा होता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब स्टूडियो सेटअप तो मिनिमम जरूरी है पॉडकास्टर के लिए। हम्म। और सॉरी मैंने मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सेल्वाडोर, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, आई एम सॉरी। आप, हाँ, नहीं, ये होता मैंने है पूछा ये ही फौजी नहीं। हमेशा यही करते हैं। पाकिस्तान में अच्छी खासी डेमोक्रेसी चल रही थी, बीच में आकर डिस्ट्रैक्ट करके काम खराब कर देते नहीं फौजी भाई, बस मैं वो आप जो बात कर रहे थे कि मैं मल्टीवर्स को नहीं मानता, मैंने कहा था कि हमारा यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, हमारे पास उसकी हाँ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, तो वो मल्टीवर्स इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अम, सोचने वाली बात है ये, क्योंकि मैं नहीं, लाइक तो मैं नहीं कह रहा कि इट्स द ओनली, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल कि लाइक अब यूनिवर्स वाइज इज एक्सपैंडिंग, सो लाइक क्योंकि अभी तक जनरली वो उसको डार्क डार्क एनर्जी को कहते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स एक्सपांशन के लिए फिजिसिस्ट उसको बताते हैं जी, जी, लेकिन आयो एक्सप्लेनेशन। हमें डार्क एनर्जी का भी तो अभी तक नहीं पता ना कि वो कहाँ डार्क से। एनर्जी का पता नहीं है, बस वो एक हाँ कंस्ट्रक्ट है, वो हाइपोथेटिकल। वो मुझे लगता है कि डार्क एनर्जी कहना भी उसको एक वो है, क्योंकि हम उसको इमेजिन करते पता नहीं क्या डार्क चीज है। लाइक आई डोंट नो कि आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, कि हमने उसको डार्क सी चीज बना दिया कि वो बिल्कुल ही पता ही नहीं क्या चीज है। और मजेदार चीज ये है कि यूनिवर्स के एक्सपांशन की स्पीड बदली है। जी। मतलब वो ऐसे तो तेज हो है गई। कि हाँ, शुरू शुरू में काफी ज्यादा तेज था, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ, अब बढ़ रहा है। तो काफी मतलब इसमें है, सोचने वाली बातें हैं। मैं फौजी भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइक हमें अगर अगर हमारे दिमाग को समझ आने वाली बात हो, तो वो तो क्वांटम मैकेनिक्स भी बिल्कुल एक लॉजिकल सी चीज लगती है। तो लाइक हो सकता है कि जो यूनिवर्स है वो इज नॉट बाउंड टू, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें। I guess you have a great point, but I don't know. It's I'm not saying that science is wrong. I'm just saying that it something weird is happening. Something weird that at least I'm not able to understand. ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है आइयो को समझ आ जाए, शादी को समझ आ जाए, आपको आ जाए, लेकिन मेरा क्योंकि मोटा दिमाग अच्छा, है तो हाँ, यस, हाँ डाली डाली एक मैंने तो एक मेरे दसवीं दिमाग में। क्लास में 10वीं क्लास में मैंने समझ लिया था। 10वीं क्लास का था जब मैं, हाँ, उस वक्त की आप बात ये जी, है। कह जी। रहे थे ना कि मल्टीवर्स कैसे एक्सप्लेन कर सकती है यूनिवर्स के एक्सपांशन को। एक जो थ्योरी है डार्क एनर्जी के लिए, सबीन हॉसेनफेल्डर करके हैं फिजिसिस्ट, वो ये जी। बताती हैं कि देयर इज अ थ्योरी जो आप कह रहे थे ना मल्टीवर्स की, वो सॉरी ऐसा है नाम कि रिपीट करें। SABINE, सबीन सबीन, हॉसेनफेल्डर, जर्मन ये जर्मन जर्मन है। है। हाँ तो वो लेडी एक्सप्लेन करती है कि देयर इज अ थ्योरी जो कहते हैं मल्टीवर्स वाले, कि आसपास वाली यूनिवर्स आपको पुश कर रही हैं, आपके यूनिवर्स के ऊपर ग्रेविटी डाल रही हैं, जिसकी वजह से जी, आपकी यूनिवर्स एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट जो भी होना है वो हो रही है। तो वो मल्टीवर्स से एक्सप्लेन इस तरह से होता है, डार्क एक एनर्जी। जी, लेकिन अगर यही चीज है तो फिर ये भी तो हो सकता है कि मल्टीवर्सेस भी आपस में कोलाइड कर सकते हैं, जिस तरह गैलेक्सीज करती हैं। यस, यस, वो तो हाँ, बबल्स एक दूसरे के आसपास में है बहुत सारे, वो देखते हैं ना पिक्चर्स में, इमेजिनरी पिक्चर्स जो रहती हैं, जी, जी। एक बबल फटता है, दूसरा बबल उसकी जगह ले ओह लेता है, इस टाइप का। सबीन, इसका नाम है सबीन। हाँ आई हाँ, नो दिस, सबीन, आई नो दिस पर्सन। हाँ ये नहीं, हाँ ये जर्मन है, जबीन हॉसेनफेल्डर। सबीन। हॉसेनफेल्डर, हाँ, सबीन। हाँ ये जर्मन No, में you आपको you pronounce it Sabine. जबीन है। No, in वो English you तो pronounce it सबीना Sabine. सबीना इन हाँ कहती हैं। इन इंग्लिश में आपको सबीन कहेंगे। जी मैं लेकिन अगर इंग्लिश आप इस प्रोनाउंस जी इंग्लिश हाँ प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूँ मैं। सबीन सबीन सबीन, यस। सबीन लेकिन मैंने इसको सुना ये लेकिन अगर आप उसको जर्मन में पढ़ेंगे ना, तो ये एस की आवाज थोड़ी सी जी के साथ जैसी मिल जाती ना, एस और जी का मिलाप हो जाता है जर्मन के अंदर। तो गॉट इट। उसको जबीन जबीन हॉसेनफेल्डर। तो
लेकिन ये है बड़ी अच्छी, इसकी वीडियोस होती है बड़ी, बहुत अच्छी इसकी है, एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी करती है ये। हाँ, और कुछ चीज़ों पे काफ़ी सख्त हो जाती हैं ये। हाँ, मेरे भी इसको बिल्कुल सही यही कहने वाला था मैं। यही क्या मेरे ख्याल में ये भी कोई प्रोफेसर ही लगती है मुझे। हाँ, ये प्रोफेसर है ना, एस्ट्रोफिजिक्स की हाँ, ही हैं प्रोफेसर। हाँ, इनका स्पेशलाइजेशन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वाले एरिया में है। तो तेरी खैर हो। जी वो जी भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका किसी को कुछ नहीं पता और वो उसके अंदर एक्सपर्ट है। ये भी एक ऑक्सीमोरन है वैसे, जी कि मैं ये दावा करूं कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, और उससे पूछा जाए किस चीज का एक्सपर्ट हो, क्या है वो, आई डोंट नो। ये भी अच्छा मजाक है वैसे। जी, मैंने वो आपको पता ना कि जेफ बेजोस बनने लगा था फिजिसिस्ट, तो वो उसने कहा कि मैं बन नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली फिजिसिस्ट बनने के लिए सिर्फ 40-50 फिजिसिस्ट ही दुनिया में एक टाइम पे कोई होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है काम की, बाकी सारा काम फजूल है जो बाकी फिजिसिस्ट कर रहे होते हैं। They're नहीं, like, बहुत सारे वो है ना, फिजिसिस्ट के इंजीनियर जिनको एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट बोलते हैं, जी जी उनकी जी वैल्यू समाज में बहुत कम है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलते, लेकिन उनकी बहुत वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एक्सपेरिमेंट्स जो वो जी जी। सोचते हैं नहीं, थ्योरेटिकल लेकिन वाले। थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए आयो आपको लाइक लाइक आई डोंट नो, लेकिन एक मुझे ये और भी चीज लगती है कि फिजिक्स बेसिकली एज अ प्रोफेशन वो एक ब्लैक वो लोग में फंस गया है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर उन्होंने बहुत 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 सिर अच्छे मारा, बहुत सर मारा है, और जो प्रोफेसर्स बेसिकली अब इसमें भी करियर प्रॉब्लम है, जो बनाने में। प्रोफेसर्स बेसिकली इस वक्त एमए जो पीएचडीज करवा रहे हैं और जो वो जो स्ट्रिंग थ्योरी ना एक रिलीजन टाइप का बन गया है। हाँ, तो लोग, बेसिकली वो पुश करें एक गलत नैरेटिव को। हो सकता है कि स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल ही बकवास हो। क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं सोच पाए हैं वो लोग अभी तक के कोई। जी, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि फिज़िक्स अगर आप लॉजिकली देखें तो फिज़िक्स की फील्ड बेसिकली एक ब्लैक होल में बंद है पिछले अभी 40-50 साल से। अटक गई, हाँ। हाँ, और इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हाँ, कोई एकेडेमिया पैराडाइम का शिफ्टिंग प्रॉब्लम की है। चीज़ की ज़रूरत है इसमें। जी। आपने जेंटलमैन, एरिक मुझे मॉरिसन की सुनी है वो मुझे जुम इजाजत जुम दीजिएगा, वो 4 नंबर बीवी बुला रही है मुझे। अच्छा, चलें चले। ज़बरदस्त। चले, आपको मुबारक हो, आपने 4 कर लिए हैं भाई, हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी 2 कर लें। तो ओ एक की एक की बड़ी बड़ी, फाइन है। अब एक ही, अच्छा आपको आप बड़ी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, चले ठीक है। चले ठीक है यार, हम भी इसको रैप अप करते हैं। आज वी गॉट लकी, मतलब मैं इस सेंस में कि मैं इसे काफ़ी अर्से से पीछे पड़ा हुआ था इनके, प्रोफेसर साहब के, डॉक्टर साहब के, तो वो हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन चले आज आ गए। तो अच्छी गुफ्तगू रही। मैं वही सोच रहा था, हमारे पास सवाल बहुत सारे थे, टाइम कम था, तो मैं आईओ से यही कह रहा था यार, तो मुझे सवाल कुछ ऐसे सजेस्ट करें ताकि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा बातें कुछ सवालों में घूम फिर के कुछ कर ही दें। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की, तो थैंक यू वेरी मच आयो, आपने जो बड़े अच्छे सवाल भेजे। तो थैंक यू मुझे शाजी लग फॉर रहा था, हैविंग डॉक्टर मास्टर्स एंड मैं देखे, गुड मैंने तो ये इंटरव्यू। कोशिश की हुई है, मैंने पहले भी एक दफ़ा वो आवी लोग को, आई डोंट नो आपने वो देखा था ये सब्जेक्ट, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त जी मैंने साइंस देखा था, लाइव फिजिसिस्ट है। देखा था। हाँ बिल्कुल, वो भी बड़े ज़बरदस्त फिजिसिस्ट है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ यही होता है कि ये प्रोफेसर के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बोलते बहुत है ना हमारे पास। तो हमें कोशिश करना होता है उनको कंटेन करने की, रोक रोक के बीच में भाई अच्छा है काफ़ी। लेकिन देखिए, हम लोग हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी हमें ये मौका देती है कि हम डिफरेंट जो लोग हैं उनसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। मैं डॉक्टर मास्टर्स की सारी बातों से एग्री नहीं करता, लेकिन दैट डजंट मीन कि जी मैं उनको सुन नहीं सकता। मैं उनकी बात सुन सकता हूँ, उस पर मैं पॉन्डर कर सकता हूँ, मैं उस पर अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकता हूँ, ये लेकिन कुछ ना कुछ आदमी सीख लेता है। और एक चीज में अगर वो चले गलत भी है, कि वो जो इनकी थ्योरी है या हाइपोथेसिस है कि जी फ्यूचर ह्यूमंस आर ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, लेकिन एक काम में वो वाकई एक्सपर्ट है, ही इज बायोलॉजिस्ट और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और इसमें तो वो वाकई एक्सपर्ट है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, मतलब ही इज़ अ पीएचडी डॉक्टर। तो अगर आप उनकी अगर बुक पढ़े तो इसके जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आई मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है एवोल्यूशन के टर्म्स में, तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू हिम एज वेल। शाची, हमारा हम एक सब बड़ा की तरफ से अननोन, उनको हाँ, हाँ मैं लिखूंगा क्योंकि मेरा एक बड़ा अननोन किस्म का चैनल है। मतलब वो चाहता तो कह सकता है भाई तू कौन है 2005 या 2007, मैं किसी बड़े के पास हूँ। मैंने इसको देखा, ये काफ़ी जगह पे जाता रहता है, इससे काफ़ी इंटरव्यूज दिए रिसेंटली इस किताब के बाद।
तो मैं उस सेंस में काफ़ी ये हम्बल के, जैसे वो आवी लोग था, उसने कहा कोई मसला नहीं यार, तुमने सवाल करने आ जाओ। तो ये होती है बड़ापन, मतलब लोगों का, उनका इख्तियार, कि वो ये नहीं देखते कि यार ये छोटा या बड़ा है। वो कहते हैं अगर ये सीख कर रहा है, नॉलेज को सीख करना चाहता है तो। शाह जी, और चूंकि साइंटिस्ट लोगों की ये बात बड़ी शानदार होती है कि वो शेयर करने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ, तो अब मेरा टारगेट है कि मैं किसी एक ऐसे साइंटिस्ट को, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकर आऊं, कि वो जो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर जो राजीव खान, अगर आप पकड़ पाए ना। किसको? राजीव खान, अ, ये RAZIBKHAN। कहाँ, ये कौन है भाई, इसका जरा ये मुझे। बांग्लादेश से हैं इनकी फैमिली, ये टेक्सास में रहते हैं, हम्म, मतलब पैदा यूएस में ही हुए हैं, ठीक है, बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं, टेक्सास में रहते हैं, प्रॉपर जेनेटिसिस्ट हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक्सपर्टीज है इनकी, चले आपने अच्छा और सजेस्ट कर हिस्ट्री दिया। को ट्रेस करते हैं सभी लाइक कम्युनिटीज की, जितने भी हमारे ये हैं रेसेस हैं, उनकी जेनेटिक हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, ये कहाँ से कौन मूव आ, हुआ है, अच्छा, कौन सी तो कम्युनिटी किससे मिली है। मतलब ये आप समझ लें कि जो एंसेस्ट्री थ्रू जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ों में तो स्पेशलाइज करते हैं, आर्यन माइग्रेशन में इनका अच्छा खासा पकड़ है। चले इनको ढूंढते हैं, इनका वैसे ट्विटर पे तो अकाउंट नजर आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, है मैं ना आई ट्विटर गेस पे, इट इनकी सीम्स टू मी पॉडकास्ट कि भी है, यही है। ब्राउन पंडिट्स पॉडकास्ट है, उमर अली साहब के साथ में मिलके ये होस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। चले ये मैं भी काफ़ी अच्छे से सोच रहा हूँ। चलिए आप, अच्छा आपने मुझे ये सजेस्ट किया। इसी तरह इनकी आप लोग पकड़ है। भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो मतलब आम आम पॉडकास्ट पे, या हमारे जो इंडियन इंडियन या पाकिस्तानी पे, हम काफ़ी सारा फोकस करते हैं रिलीजन के ऊपर। वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए। तो लेकिन साथ साथ में अगर कुछ इस तरह की भी हो जाए, थोड़ा सा थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो, आप समझते हैं कि यार कोई मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि मैं तो किसी पॉलिटिक्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी ले आऊँ। मतलब मैं उसे एग्री करूँ या ना करूँ, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया या पाकिस्तान में मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैं पहले ये सोचता था यार मुझे कौन वो लिफ्ट करवाएगा, लेकिन मैंने 3-4 इंटरव्यू करने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, लोग इतने भी नहीं है। क्योंकि अभी ये रिसेंटली मैंने, अभी कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, रिचर्ड गॉडफ्री का। अ, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। अ, वो भी एक लीडिंग साइंटिस्ट है, और मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी इसको, वो जो मलेशियन एयरलाइंस का मिसिंग जहाज, उसको ढूंढ लेंगे। वो भी एक बड़ी, एक आई ओपनिंग किस्म की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को आप समझते हैं कि यार इससे बात करनी चाहिए, ऐसा हो सकती है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। आप उसको भी लेकर आए ना, वो जो लाइडार के ऊपर, अब तो वो प्रोफेसर बन गई पाकिस्तानी, जिसका MIT के अंदर, अब तो मेरे ख्याल में डीन बन गई हैं, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, या मुझे नहीं पता, इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच की। याद है आपको? मुझे उनका नाम भूल रहा है, जो लाइडार एक्सपेरिमेंट की। हाँ हाँ, मुझे यार मैं नाम चूज कर लेता हूँ। चलो ठीक है। फॉरी सीरियल यार, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आप इनपुट दिया, और सब लोगों का भी शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में आज इसको रैप अप करते, 2 घंटे होने वाले। ये आज स्पेशल शो था, और अगेन मैं डॉक्टर मास्टर्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। वहाँ तो बड़ा सुबह सवेरे का वक्त था, मेरे हाल में 9 बज रहे थे। अब मुझे वो कहते मैं तो सुबह 6 बजे को उठा हूँ, था अच्छा भाई ज़बरदस्त। और वो बता रहे थे कि वहाँ पर 2 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ रही है बल्कि। तो हमने उनसे कहा हमारे यहाँ तो भाई Great. 40 टेम्परेचर जा रहे हैं, तो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ कॉर्नर्स आप समझ लें। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है ना कि यू कैन कनेक्ट विद एवरीवन ऑन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड ये आज आपसे 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं डॉक्टर मास्टर से ये इस तरह के सवालात करूंगा लाइव बैठ के। तो ये है फ़ायदा टेक्नोलॉजी का, तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप कोई फाइनल थॉट्स को कमेंट करना चाहते तो प्लीज़ गो अहेड, और फिर उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। डाली साहब, अच्छा नहीं, हाँ, नहीं, ले मेरे पास तो कोई कमेंट नहीं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। बस आप हमेशा की तरह, रुस्तम भाई हमेशा बहुत ज़बरदस्त काम करते रहे हो आप दोनों, तो थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू डाली। थैंक यू।
गुड नाइट। मैं भी पर्सनली डॉक्टर मास्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स थी। पिछली टॉक से हम लोगों ने काफ़ी अलग क्वेश्चन पूछे और काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। हाँ तो ये एक एडिशन है जो उनकी टॉक्स है उसके बारे में। मैं शाह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी जो आने वाली बुक है उसके साथ आप जैसी पब्लिश होती है तो कांटेक्ट किया जाए उनसे और फिर से उनको इनवाइट किया जाए। हाँ, मैं बल्कि मैं सोच रहा था अगर हमें मौका मिले, आयो अगर ये बुक कहीं से मिल जाए तो हम इसके ऊपर एक रिव्यू भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। उनकी जो पुरानी बुक है हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल उसका भी ऑडिबल एक में मिल रिव्यू। जाएगी, है ना? ऑडिबल हाँ में? हाँ, ऑडिबल में बिल्कुल है, उठा ऑडिबल लूँगा। पे है, बिल्कुल है, मेरे पास है ऑडिबल पे। और वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मौजूद होगी। आप उसकी वो मतलब अगर आपको स्लाइड बनानी है या देखनी है तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं ना, दैट ये भी एक बड़ा आर्ट एक होता है आदमी का, आप किस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। आई लाइक द वे ही एक्सप्लेन, मतलब वो बड़ा कॉमन सेंसल, और उसमें ऐसे नहीं है कि बहुत जार्गन को हो। तो मुझे तो उसकी बात समझ आ रही थी, कुछ उसमें सेंस लग रही थी, उसमें मुझे लॉजिक नजर आ रही थी। तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ बहुत जगह पे, लेकिन एटलीस्ट मुझे उसकी उसकी लॉजिक समझ में आ रही थी कि वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं। तो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज, काफ़ी अच्छे बात बोला, अच्छा एक शो रहा। तो थैंक यू वेरी मच आयु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो फिर अगले हफ्ते होपफुली अगर मैं ज़्यादा बिजी ना हुआ तो मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, आप सब लोगों से, एक नए सब्जेक्ट के साथ। और अगेन अगर आप प्लीज़ इस पर कोई कमेंट कर दें या मैसेज कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने जैसे पहले कहा, मुझे कई दफ़ा अभी मैं देख रहा था, जब वो डॉक्टर मास्टर्स के साथ बात कर रहे थे तो वो 300 के करीब लोग देख रहे थे। जैसे ही वो गए वो एकदम डाउन हो गया। तो हो सकता है वो शायद डॉक्टर मास्टर्स की वजह से आ गए हो, हाँ, ये क्योंकि हम उनका ऑडियंस करके, था। हाँ हम लोग अंग्रेजी में भी बात कर रहे थे तो शायद इस वजह से। तो लेकिन अच्छी बात। तो तो मैंने देखा कि मेरे चैनल पे लोग आते हैं, काफ़ी आते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम होते हैं। तो उससे मुझे आपका फीडबैक पता चल जाता है कि अच्छे रहा, कोई गलत रहा, कुछ सजेशन होती है, हाँ, आप प्लीज़ जरूर दिया करें। उसका जो कोई है शिकायत हो तो वो भी कर दिया करें, हाँ, तो अगर वो आपको भी। आईओ की कोई बात बुरी लगी हो, मुझे पता उन्होंने कोई बुरी बात की होगी, तो आप कर दे भाई, हमसे आपकी शिकायत आईओ तक पहुंचा देंगे। तो आप मुझसे मेरे ईमेल पर रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स ऑन द वीडियो, क्योंकि उस वीडियो को अगर नीचे लिखा हो तो आपको ये अंदाजा होता है कि अच्छा इस वीडियो से मुताल्लिक है। बाज़ औक़ात ईमेल पे आप मुझे किसी पुरानी स्ट्रीम का मुझे अगर रेफरेंस है तो मुझे कई दफ़ा देखना पड़ता है, अच्छा यार ये मैंने 3 महीने पहले की थी, 3 घंटे की थी, मैंने कहाँ ये बात की थी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उस वीडियो के नीचे उस पर कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी उसको ढूंढने में और रेफरेंस करने में, और मैं उसका अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकता हूँ। तो वरना ईमेल एड्रेस rustamshahji@gmail.com, उस पर कर सकते हैं। तो चलें, अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। आप लोगों के देखने का और पसंद करने का शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।